输在比赛一瞬间，我觉得 LPL 冠军队友远远不够。就我还需要一次世界舞台证明自己。What's up? 我赢得过。Hello. 赢得过 China vs Korea. Hello. 但现在我只想在世界赛上证明自己是最强中的。My friends, hello, hello. This is Bubbly Gaming versus WBG. Ooh. Rizzy. What's up, hello? यार ये वाली मैच से ज्यादा हाइप वो वाली मैच है ना अभी ये मेरा विंडो कैप्चर ऐसे क्यों आ रहा है कट क्यों रहा है एक सेकंड 这次也不会例外。虽然你们在 LPL 击败了我们无数次，但是最重要的胜利不属于我们。When is Genji versus T1? It's tomorrow, bro. It's tomorrow. It's tomorrow. या मैं तो फाइनल्स की ओपनिंग सेरेमनी देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत बहुत 所以不管这一次我们谁进入到总决赛，都要让 LPL 的欢呼声响彻伦敦。एक अच्छा हो गया आज रात्रि ग्रुप गेम्स नहीं है शायद एक अच्छा हो गया कि कोरिया वर्सेस एलपीएल होगा ना फाइनल में मजा आएगा देखने को यार लुकिंग फॉरवर्ड्स टू इट ओह फक स्टेज देखो भाई इज लॉल ग्रेटर देन वैलो फॉर यू फॉर मी एज अ गेम यस एज अ गेम एब्सोल्युटली यार 100%. ओ भाई स्टेज देखो बे भाई साहब फाइनल्स का स्टेज अलग होगा ना ये थोड़ी होगा फाइनल्स का स्टेज यही होगा क्या दिख रहा है बे Hello. I can speak finally. हेलो कैसे हो भाई अच्छा चल रहा है आज वो गाना है क्या 6 बजे 6 बजे यस सर जमापुर अरे भाई इधर चार्ली भाई ने भी सुने आईफ्लिक्स भाई ने भी सुने दोनों ने गाना सुना है लेट्स गो बेबी मजे आने वाले भाई अभी तो वीडियो देखो भाई वीडियो भी बहुत पावर बना है इंस्टाग्राम पे आ गया स्पॉटिफाई पे आने शायद और थोड़ा टाइम इंस्टाग्राम पे किधर आया है रील्स पे मतलब रील्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है मतलब वो म्यूजिक होता है इंस्टाग्राम म्यूजिक उस पे आ गया है अभी इस पे आना बाकी स्पॉटिफाई और वो सब पे चेक चल रहे कुछ उसमें भी आ जाएगा जल्द फुल पावर विषय कोल फुल पावर जैसे तुमने वो प्लान किया था वैसा पूरा बनाया क्या हाँ भाई वीडियो तो एकदम फटने बनाया ना ऑडियंस में क्यों बिठा है मेरे को ऊपर करो देखो एक बार ये ट्रेलर देखो इस पे मतलब मेरे प्रीमियर पे जाओगे ना ट्रेलर दिखेगा उसमें ही देखो भाई दिखता है प्रोडक्शन फुल अच्छा रखे हेलो हाय तो चार्ली को निकालो यहाँ से मुझे नहीं चाहिए मैं भी वही चाहता हूँ कि जाके सो जाओ वापस कैंपर सेट को परमिशन दे रहे और मां को सो चलो हो गया
Oh yeah, let's go. What's up? हेलो सिड बाय। What's up? अच्छा गाइस सिट स्ट्रीम कर रहे होंगे तो प्लीज आप ना थोड़ा मुंह कंट्रोल कर लेना अगर यहाँ कुछ बोल कोई दे तो। टेंशन नहीं है, सब अलाउड है मेरे स्ट्रीम पे। सब अलाउड है। अच्छा शुरू कर दे फिर सब कुछ। अपना पूरे इंडिया में only Sid has the right to stream, right? हाँ सिर्फ सिट के पास राइट है। Damn. Damn, bro. Yeah, baby. Damn. ओ भाई गिव अवे। Oh, that was nice style. दूसरी कौन सी टीम है? 88 VIP. ये वाली WBG and BLG. WBG। ओके। वीवो कुछ तो वेबसाइट है ना उनका, वीवो ओ उनकी टीम है, वीवो गेमिंग, और एक बिली गेमिंग है। बिली आई थिंक वैलो में भी है। हाँ वो है। ये आवाज नहीं है ना कि बढ़ाओ मैं आवाज? सही है, आवाज तो सही है। उनके यहाँ पे ये चलता है ना, बिली गेमिंग ही चलता है ना इसमें भी, मतलब ट्विच नहीं है उन पे। हाँ चाइना में। मेरे को लगा ओ सेमी से आज। Yes. सेमी से नॉकआउट सेमी से। हाँ नॉकआउट ऑब्वियसली। नॉकआउट ही है मतलब। Yeah. सेमीफाइनल आज है, सेमीफाइनल 1 कल है, सेमीफाइनल 2 कल वाला तो मस्त है, T1 वर्सेस जेंजी। ओ भाई अबे लेकिन पता है स्टीवन वर्सेस जेंजी फाइनल्स में मजा आता है करने देखने को। Yes. But अभी ये दोनों में से एक टीम चला जाएगा यार। वो क्लैश हो गया। माँ कसम सिड भाई, माँ कसम इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ लीग ऑफ लेजेंड की इतनी बड़ी टूर्नामेंट। भाई तुम ये तो बड़ी है ही नहीं, ये तो स्टेज तुमने छोटा खेला है है। क्या? हाँ खेला है। फाइनल्स नहीं देखे इन्होंने अभी तक कभी। तुम फाइनल्स देखो भाई, ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा इवेंट लग रहा है अभी ये जो लीग के हिसाब से। तो अलग अरीना में तुमने तो भाई सीएसगो का भी तो फाइनल्स वगैरह तो देखा है, क्योंकि मैं तो सीएसगो ही देखा हूं, तो उसके कंपैरिजन में तुम्हें क्या लग रहा है कि मतलब एलओएल का क्या उतना ही हाइप होता है जितना? ब्रो एलओएल के फाइनल्स अनमैच्ड है, कोई मतलब जेन्युइन बता रहा हूं। कोई भी उठा के कोई देख टक्कर लो नहीं दे ना सकता। एलओएल का कोई फाइनल्स। टक्कर नहीं दे सकता। नहीं, मैंने ट्विच पे एक की वॉचिंग देखी थी, वो वॉच पार्टी कर रहा था, 156 की वॉचिंग थी वॉच पार्टी को। केट्रल मैं तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी ऑडियंस होगी। आई थिंक ट्विच पे करेंटली जो स्ट्रीम हो रहा है अभी, इट वाज करंट वाचिंग इज लाइक 1 मिलियन या 2 मिलियन या उससे ज्यादा होगा। मैंने पुराना वो फ्लाइक्विस्ट वर्सेस जेंजी देखा यार, मेरे को वो बहुत मजा आ गया था भाई। फ्लाइक्वेस्ट अच्छा खेला, लेकिन कुछ भी बोलो भाई। अच्छा खेला यार, अच्छा रहेगा भाई। जेंजी के इतना फ्लाइक्विस्ट को ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहा था यार, समथिंग एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग जेंजी टू विन, बट फ्लाइक्विस्ट का सपोर्ट ही बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली एनए के हिसाब से अच्छा खेले वो लोग। नहीं देख चार्ली ओलंपिक हो गया, थोड़ा सीख लेना। मैंने आपका गेम प्ले देखा है बहुत। देखिए मैं सेट खेलता हूँ, सेट द बीच बॉय बास्टर्ड। सिर्फ से लेकिन मैं आपका स्ट्रीम पर सो नहीं सेट, ओनली सेट। होने ना हो क्या हमसे। मैच चालू हो रहा है तब तक कॉफी लेके आता हूँ क्विक। अभी जो नया एजेंट आया है वो भी है क्या अभी? नहीं एजेंट वो क्या है एजेंट वाले ने? मतलब चैंपियन नहीं, लीग में वो लोग हमेशा एक पैच पीछे रहते हैं, मतलब हाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं होता वर्ल्ड्स या कोई भी बड़े इवेंट के टाइम। क्या है नए वाले का नाम क्या है? एम्ब्रियो सर। हाँ 50,000 स्मोल्डर लिया भाई। ओ सिड भाई, स्मोल्डर तुम्हारे लेते तो फेवरेट है ना? हैं, नर्फ के बाद भी लेते हैं।
सिर्फ आपके साथ प्लेग्राउंड का बंदा है क्या जो वाइल्ड कार्ड में आया था? कोई आया था क्या वाइल्ड कार्ड में? हाँ ये है ना चार्ली जो कॉफी लेने गया। हाँ है वही है। तो मैं एक हफ्ते बाद से बोल दे मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, बाय बाय। वो ये टॉप लेनर है क्या ये एबेसा? हाँ टॉप लेनर है। He's been most confident on things like the Renekton, the Nard, and these kind of things. But already Kazante banned away. I imagine we'll get one of those banned away. ओ भाई ये डैश विश करता है, डेंजर लग रहा है ये। बहुत डैश करता है, बहुत मोबिलिटी देखो उसका। वही ना, भाग रहा है सिर्फ। It was the Shy able to control Bin so well on that top side. Now with the Nard taken away, how does Bree try to control Bin on his jacks? I think that's a big question, but also how can BLG answer what we've seen drafted in the bot lane by Light? Camper, are you here? This is going to get banned away. One of these neutral डिस्कॉर्ड पे कोई लड़की है या छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है। When you look back towards the finals, Elkin were running this 2v2. They were crushing Light and Crisp. Now a lot of key picks have been banned away here from Elk, so they're going to have to problem solve whether it is going to be a lane swap to try to avoid that 2v2 or something a little bit unexpected to try to draft some power here. The Varus obviously is a strong laner. If you do this alongside another strong laning support, MF another option, those would be the kind of two ones that I think you could maybe go head to head, at least try to take that 2v2 on. All right, they're going to spend the whole timer thinking about it, but they will lock in the Varus there for Elk. Immediately, though, look at the numbers at the bottom of your screen. So far at Worlds, it's been a 6-pick champion, 1 win, 5 losses. It hasn't seen much success. And I think a lot of that has been, there's been so much prevalence of dive. It's very difficult to set up on the Varus and actually have a lot of... ये स्मॉल्डर कहाँ खेलेगा? बॉटम खेलेगा कि मिड खेलेगा? मिड खेलेगा। बॉटम पे उसके स्टैकिंग थोड़ा पता नहीं, मिड खेलते हैं नॉर्मली। और वायरस भी ले लिया है ना वो लोग ने, तो वायरस बॉट ले लिया वो लोग ने ऑलरेडी। Afterwards, I think you're in an okay spot. I mean, वो दोनों ही मिड बॉट दोनों खेल ही सकते वैसे तो। Obviously, this is still a flex pick, and we have to find out from Weibo what that last lock-in is going to be, and that'll tell us what the lane matchup is going to be. It does mean you're heavily reliant though on brand kind of send in that ultimate with that, but okay, it's actually भाई बहुत BT लेजेंड है। भाई मजा आएगा ये गेम में। ब्रांड जंगल, ओके। ब्रांड सब करता है अभी, जंगल मेड सपोर्ट एडी कैरी सब करता है ब्रांड। To me, yeah, specifically the brand, he was incredible on it. I think this guy is so flexible. एक सेकंड, वीरस that Weibo has, and I thought BLG में ADC कौन है? BLG में वेरस 4th पिक। तो इनका पिक ऑर्डर वैसे होता है, टॉप जंगल मिड एडी कैरी सपोर्ट। नहीं वैसा और पिक नहीं करते, बाद में चेंज करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं। हाँ बट ना पिक नहीं करते, बट जैसा वो लिखा हुआ है ना तो वैसे ही ऑर्डर में होता है वो। Find timings to play around like the jacks on that top side. Try and find this lockdown, playing off this pushing bot lane now as well. It feels like a lot of this game though is going to rely on that bot lane and how you can try and get. Look at the sponsors on their. BLG in the past has been very good on. But Weibo domestically have been incredible at as well. It's going to be really interesting. And Nico just. हाँ भाई बड़े organizations है वो बहुत। You know, especially when you are playing as a support, you don't have enough gold to really have a ton of damage behind your Qs and autos. It's really all about that initial engage. Can you find that perfect ultimate? Can you find those E's through minions to set up plays, to set up ganks? Because if that gets flashed, if that gets avoided, all of a sudden you really have nothing left and no tankiness to kind of stand up and fight. And a huge amount of this is going to be Weibo trying to track on in the early stages. On is great at finding these windows to go and roam around the map, find ways to impact the game. But if you're not keeping track of this Nico, suddenly there's an extra minion in your lane and you're like, hang on, that's a bit suspect. So सीड भाई ये हर्ष को बताओ, कुछ ऑब्जेक्टिव लेता नहीं, बस मारने को जाता है। अरे FPS का प्लेयर है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। भाई मैं सपोर्ट खेलता हूँ। सपोर्ट कैरेक्टर लेके मैं जाता हूँ भाई। नहीं मैं ऐसा टॉप वगैरह लिया तो जाता हूँ ना भाई टीम के साथ ऑब्जेक्टिव करने। सपोर्ट लक्स खेलता है ना तू? हाँ। अरे आप तो बीच में टैलेंट खेलते थे ना, क्या हो गया? हाँ यार टैलेंट भी करता हूँ, मेरे को मजा आता है भाई खेलने बहुत।
मैं तीनों लेन खेलता हूँ, बट एक एक ही लेजेंड आता है तीनों लेन का। सिर्फ जंगलर नहीं किया मैंने, टैलोन जंगलर करना है मेरे को कभी। But Bin has not felt like Bin, where he is just so overwhelmingly मैंने भी अभी तक जंगलर नहीं किया। साला टाइमिंग भी गलत हो गया, साला गाली देने चालू होता है, आता ही नहीं होता है। यही है ऑब्जेक्टिव। भाई मैं जब मरता हूँ ना, मैं जब मरता हूँ सबसे पहले गाली जंगलर को ही देता हूँ। हाँ पूरा गेम समझने तक जंगल खेलो ही मत, गाली खाओगे। And it is crazy to say when you're like, well, Bin solo killed Zayas. He's actually had some individually great performances, but I would 100% agree with you, Zay. It's when it gets to like team fights where decision making hasn't been good. Yeah, and it's those are what makes a good Jax great, and those are the things. और हर्ष कितने एक्साइटमेंट है। His decision making in these team fights. दर्द हो रहा है मेरे को तो। Just hasn't been as good as we expected to be for this guy. And yeah, we just have insanely high standards. When I've talked to other pros about laning against Bin, this is one of the guys that people always talk about is so frustrating to lane against. Not because he does anything crazy or flashy, it's because he makes no mistakes. That's what everyone tells me when they're playing. Predictions, I think 3-1 Billy Billy. He's gonna play every trade perfectly, and it can feel kind of Billy hopeless Billy against him, where he's just creating these slow incremental advantages. ये गेम में भी वैसा है क्या, लाइक यंग ब्लड्स काफी मचा रहे, जैसे वैलो में यंग ब्लड्स एकदम पीक पे चल रहे हैं। मिक्स है, इसमें मिक्स है, इसमें पुराने लोग अभी भी खेल रहे हैं और नए लोग भी मिलते हैं। मतलब यार कोरिया चाइना में तो बहुत नया टैलेंट आता है, हर साल आता है। shut down the leap strike from the Jax, but when we're looking at some of the other champions on the roster, it's not going to be as effective as it would be if it was on the other side. For instance, you could block a Callista or something similar. I think it's just such a good matchup in the lane phase, though, that you're like, hey, look, this is going to be fine. It's kind of come out as this. I can just push the lane, trade evenly with you, and prevent you from being able to trade effectively. Was that steadfast presence? Pick Garen, please. And even later on, just that ultimate is so busted. ये उन्हें देखूंगा भाई कैसे खेल रहे हैं। Like, if Skarner goes bye-bye, he's not coming back for a very long time. No, I completely agree. I mean, there's also an angle, even if it's not with the steadfast presence, the shutdown plays. Skarner wants to come through a wall on an unexpected angle. You can easily E him and slam him into the wall. Nico is looking for an ulti. You can actually ult Nico out, or even just charge and push Nico back to avoid that ulti hitting your carries. There's a lot of good plays that can still be made, even if it's not with the W. All right, update for everybody. जो एनिमीज जब पिक करता है तभी दूसरे को दिखता है क्या पिक कर रहा है? यस तो नॉर्मली कंपैरेटिव मैचेस में वैसा ही होता है, बट हम जो इवेंट खेले थे उसमें बिकॉज स्ट्रीमर्स थे वो तो ब्लाइंड। हाँ तो इसके लिए वो ब्लाइंड पिक था। मैंने रैंक पे खेला था, जब रैंक पे खेलते हैं तो दिखता नहीं है ना कि सामने वाला क्या दिखता है रैंक में भी तो दिखता है, रैंक में दिखता है सामने वाला। हाँ क्या फायदा सिड भाई, हमको इतना तोड़ा था, हर्ष मेरे टीम में था, पूछो उसको, इधर भी जाओ तोड़ ही रहे थे। फाइनल्स खेले थे, फर्स्ट मैच खेले थे, फर्स्ट मैच, फर्स्ट और सेकंड मैच में तो बहुत गंदा पिट गया था भाई, बहुत मारे थे भाई। इन्होंने वो पहले के 3 नॉकआउट मैचेस खेले थे बस, नॉकआउट में ही बाहर, नॉकआउट हो गया है। I do think bot lane could be very explosive. But I do think for Weibo's side, you nearly need to play the counter gank. Because if you have this overextended Skarner, if you already have some of that committal, it becomes way easier then for you to try and play for the turnaround with the... ये जो जनरल में बैठे इनको ही खींचने वाले हैं ऑडियंस, इनको एक्सेस ही नहीं है। रवीना जी क्या बोलो? जनरल में जो बैठे उनको या एज ऑडियंस खींचने वाले हो ना, या उनको एक्सेस नहीं है? 10 लोग बैठे हैं जनरल में, जनरल वाले जनरल पे बैठे हुए, अपना ऑडियंस यहाँ पे है 7 लोग। ओह जनरल वाले तो बाकी में ज्वाइन नहीं कर रहे। ओह हेरी जोशी, द फक, वो लोग पुराना दोस्त है ये तो। अगर वो लोग चाहे तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेकंड, दोस्त है दुश्मन है याद नहीं आ रहा है, बट है पुराना है बंदा। अरे आपके सेम नाम का बंदा हमारे बाजू में बैठा है सिड भाई। कौन? सिद्धांत जोशी। तुम्हारे बाजू में कौन? अरे श्रीमान भाई, तुम्हारे बाजू में कैसे बैठा है? बूट कैंप में। उनको बोलो वो भी आ जाए बैठने के लिए हमारे साथ। उनको बुलाओ, बोलो आ जाओ, आना है तो। रुको बुलाता हूं। और नीचे शूट कर रहे थे, आपका ही शूट कर रहे थे जो आपने दिया है ना उनके सर पे। मैंने क्या दिया उनको? बताता हूँ बात। good TP flanks. We get to set up for him to always have an avenue of an attack that's not just front to back. And I think especially in a game where you are playing against a Brand, a Renata, these things that excel when they just have everyone running towards them,
you need to find these creative ways, but we'll have to see how this early game goes, because I feel like whoever gets control of this bot lane gets to dictate the pace of the game and can try and take over. Do you guys think that means we're going to see more priority also over Drakes compared to how we've seen some previous क्या हुआ चालू क्यों नहीं हो रहा in favor of the grub specifically? क्या होता? Mostly just all सारे वो बच्चे भाई ही लग रहे हैं मेरे को। वो माउस चेक कर रहा था, टेक्निकल माउस चेक कर रहा था, फ्लिक्स लगेंगे कि नहीं उसको डाउट आ रहा। तुम लोग ने वो वाला वीडियो देखा जो फेकर का पीछे से उसने प्री मैच वार्म अप कर रहा था वो? उसके माउस का मूवमेंट है वो गान फट जाएगा तुम्हारा। अरे मैंने तब देखा था फेकर तो आपने किया था ना जब आप बता रहे थे एक्सप्लेन कर रहे थे लीग ऑफ लेजेंड। हाँ तब देखा था मैंने, बोला माँ कसम इनके सामने नहीं आना है बिल्कुल भी। भाई वो कैसे चला जाता है भाई सामने। ब्रो द फक ये क्या ओसू कर रहा? ओसू तो अच्छा नहीं नेवर माइंड, मैं कोई तो ट्रोल वीडियो देख रहा हूँ। नहीं रुको मैं दिखा था, अभी जस्ट रिसेंटली आया था फेकर। भाई मेरे को बहुत सही वीडियो मिला है। ये क्या आया है $400? वो चालू हो गया। ओ कैनेडियन डॉलर। $400 का सुपर चैट है। चलो एक सेकेंड, I know I'm getting a bit sin. Can you filter out my raw file? Can't share on any details, but मेरी फाइल पूरी पढ़ने के बाद मुझे हिट क्या लिखा है मेरे को समझा नहीं, कौन सा फाइल? यार पार्थ भाई व्हाट आर द चांसेस? आज मैं अपने जूते लेके आया था बाजू में, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू, क्योंकि मतलब पब्लिक को मेरे को मजाक भी नहीं, देखो बाजू में ही रखे हैं मैंने, क्योंकि आई वांटेड टू शो द पीपल कि दीज शूज जो हम लोग ने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया था, मैंने उस दिन पहने बाहर जाते टाइम, ये इसके कलर्स देखो कैसे शाइन मारते हैं, जस्ट वॉच। तो मैं लिटरली दिखाने लेके आया था, मैं क्या दिखाऊंगा करके, और आपका आप सुपर, बट मेरे को समझा नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं मेरे को, बट मेरी पूरी फाइल फिल्टर आउट माय रॉ फाइल, व्हाट डू यू मीन? मेरे को नहीं समझ रहा पार्थ भाई, मैसेज करो। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट पार्थ भाई, अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। अबे नीचे कोई नहीं है। हाँ तो लेन स्वैप करते हैं वो लोग, डबल मिड कर रहे हैं वो लोग। ये जो कलिस्ता है ना, कलिस्ता वन ऑफ द हार्डेस्ट हीरोज टू प्ले है। इसको एक बार प्रैक्टिस मोड में बस खेल के देखो, इसका मूवमेंट कैसा है देखना एक बार, मजा आएगा। जो टॉप खेल रहा है वो, हाँ कलिस्ता जो मार के ऐसा हिल रहा है, देखो एक फटका मार रहा है और मूव कर रहा है, वो वाला लाइट जो खेल रहा है। सिड भाई आपको पता है करके पूछ रहा हूँ, ये नासिस कैसा है खेलने को? नासिस बहुत अच्छा है, और नए प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, बट वो बहुत स्लो नहीं लगता एज कंपेयर्ड टू अदर प्लेयर्स? नहीं स्लो नहीं है। तो उसको कैसा है ना, तुमको 25 मिनट कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ तुम्हारा क्यू मार के स्टैक्स लेने और घोस्ट लेना है। स्लो एज इन तुम बोल रहे हो मूवमेंट स्पीड वाइज स्लो बोल रहे हो क्या? हाँ। तो उसके लिए उसके ऊपर घोस्ट और टेलीपोर्ट लेते हैं, उस पे फ्लैश नहीं लेते कभी भी। और तुम 200 250 300 स्टैक्स बना लो और फिर एडी कैरी को एक बार तुमने डब्ल्यू अगर मार दिया, एक बार पकड़ लिया घोस्ट मार के, तो एडी कैरी मरना ही है, मतलब 100% मरना है। Yeah, and should be able to get a good chunk of it, but it's a very large wave that Breathe is going to be able to get. Already having level 3 has to flash. पार्थ भाई मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। Think this is a good idea to do this? या इसका कुछ रीजनिंग होता है। अपने साथ अगर कोई वो अक्षत वक्षत होता तो समझा देता, उसने मेरे को समझाया था, बट मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। जैसे अभी नेसस का आपने मेरे को समझाया, बाकी मैं किसी को नहीं समझा पाऊंगा। हाँ नेसस एकदम लो लेवल है, ये जो चीजें कर रहे हैं ना, वो चीजें समझने के लिए अपने को कोई प्रो प्लेयर चाहिए यहाँ पे। यार रवीना ये करो ना, एक कोई प्रो प्लेयर बिठाओ ना हमारे साथ। अब मैंने बोला था अक्षास को बुलाने के लिए, पता नहीं सीन क्या नहीं है क्या? रुको मैं गाली डालता हूँ। गाली डालता ओ भाई। अच्छा नेसिस का सीन ये होता है कि वो जो क्यू होता है ना, वो जब भी लास्ट हिट करता है एनिमी या मिनियन पे, उसको स्टैक मिलता है। तो बेसिकली ओवर टाइम उसका डैमेज एम्प होता है, तो हर 10 मिनट के लिए उसके पास एटलीस्ट 120 स्टैक होना चाहिए।
Bro, crazy भाई, crazy किया. इस रियल लाइफ आ जाता मजा. Shots will come in 15 to 20 minutes. Said. अच्छा ठीक है. हाँ. तो वही होता है लेट गेम उसके पास इतना क्या कहते हैं एजिलिटी और हेल्थ होता है कि वो बस क्यू से एडीसी यार को शुरुआत में स्मोल्डर इतना छोटू दिख रहा है ना. तो स्मोल्डर भी लेने का फायदा ये है क्योंकि इनके पास ना इनफाइनाइट स्केलिंग होती है. मतलब गेम अगर 2 दिन भी चल गया ना वो चैंपियन उतना पावरफुल होते जाएगा. 2 दिन गेम चला तो सिर्फ भाई खराब ही हो जाएगा गेम. मतलब तो कहीं बाथरूम जाना भैया. एक्सट्रीम एक्सप्लेनेशन दिया है वो. ये मतलब इनफाइनाइट स्टैकिंग वाले चैम्प्स है तो नेसस वगैरह तो स्मोल्डर फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है. नेसस तो अर्ली नए लोगों के लिए बहुत अच्छा चैंप है मेरे हिसाब से. कौन सा नेसस? नेसस वो जो वुल्फ टाइप दिखता है थोड़ा. सुजन क्रेजी है भाई वो. कुत्ता है. हाँ कुत्ता है वो. वेगार के पास वेगार के पास भी होता है यस बट वेगार मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा नए प्लेयर्स के लिए. A little bit over 30 seconds till that first set of grubs spawns as Shun makes his presence known in the mid lane, but Xiaohu already having the Q3 ready to go can just walk away from. पर भाई मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आपने क्या बोला है. वापस पढ़ूं क्या? I know I'm getting a bit selfish, but can you filter out my raw file? Can't share or say any details here, but मेरी फाइल पूरी पढ़ने के बाद मुझे हेट मत करना. And that's why he committed the early flash, and I think it paid off big time. Xiaohu missing the Q3, still trying to trade with Knight here in the mid lane. Level 6 available for the Smolder, but not quite yet on the Yone. You can see the EXP on the side there. Xiaohu just now getting it. And no TP on Breathe either, so this is a can we get quickly one of these grubs for ourselves. Okay. Looks like Tarzan should be able to do so as BLG get in, but Weibo just need to disengage from this one. Yeah, Tarzan's gonna grab that first grub, smites down the second. Actually, 2 grubs over to Weibo. Third one is secured by BLG. Really nicely done there by Tarzan. He gets multiple. ओ बाप रे बहुत बड़ी फाइल है तो. ठीक है मैं समझ गया ये पढ़नी है ना. ठीक है पार्थ भाई ये पढ़ता हूँ स्ट्रीम. रुको मैच के बाद पढ़ता हूँ. मैच खत्म होने दो. ओ भाई टोरे ले लग रहे. ओ भाई चारों के चारों पांचों के पांचों ऊपर आ गए. That's going to turn into a whole lot of nothing. All right, couple of moves, but nothing really connects. But Breathe is still pushing in this bottom side, so yes, you do get some of the flashes, but you now need to trade this with BLG on the top end. Tarzan trying to keep showing The heck is that purple line in between, भाई? अरे यूजुअली ऐसे सीन तब होता है ना जैसे कि लाइक ड्रैगन या रिफ्ट या वो होता है तो सारे के सारे टीम उस साइड जाते हैं क्योंकि उन सबको ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है. नहीं मैं कह रहा हूँ वो जो BLG ऑन है. ऑन है पर्पल का. पर्पल लाइन क्या है? पर्पल लाइन. हाँ जैसे अभी ये देखो ये जो ब्लू एंड येलो लाइन है जो माना वाली लाइन है उसके सेंटर में देखो एक लाइन है. देखो हेल्थ बार के नीचे. हेल्थ बार के नीचे और माना के ऊपर दिख रही है. हाँ दिख रहा है. What is it? Maybe armor होगा वो शायद. नहीं. आर्मर मुझे पढ़ता हूँ मैं आधा पढ़ लिया मैंने बट मेरे को वो ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा. तो मतलब हम इतने अभी सिड भाई को पूछ. सिड भाई क्या बोलो. वो जो ऑन के ऊपर क्या बोलते हैं हेल्थ और माना के बीच में जो एक पर्पल लाइन आई थी वो क्या थी? किसके ऊपर? जो WBG ऑन. हाँ अभी दिखेगा तो बताता हूँ. BLG का ऑन शायद. अच्छा वो आई थिंक किसी का वो ट्रांसफॉर्म करता है तब आती है वो. वो देखो ऑन के ऊपर. हाँ वो कोई बना हुआ है देखो वेरस बना हुआ है वो दूसरे का रूप धारण कर सकता है. वो देखो अब स्कारनर बन गया वो. उतने टाइम तक वो बन सकता है ऐसा. कितने भी टाइम तक. आई थिंक वो हेल्थ बार है क्या. और अभी ना वो पर्पल कलर का क्या है वो. नहीं वो पर्पल कलर तो आप सही बोल रहे हो. मतलब उसके पास किसी का कॉपी है. हाँ कॉपी है मतलब कॉपी बनने वाला हुआ है. जब वो कॉपी खत्म हो जाए पर्पल लाइन जाना चाहिए. वो मिनियन भी बन सकता है वो. हाँ मिनियन बन सकता है. ट्रैप्स बन सकता है.
शेको बॉक्स बन सकता है, जंगल मॉन्स्टर्स बन सकता है। कुछ तो बना होता है, क्लोन बना के डाल दे। मैं उसको वो खेलना इजी है, हार्ड बहुत हार्ड होगा ऑब्वियसली वो खेलना। नहीं इतना हार्ड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, बट एकदम इजी भी नहीं है, बट एकदम हार्ड भी नहीं है। थोड़ा वो वाला है, थोड़ा आईक्यू है वाला मतलब, गेम है। हाँ आईक्यू वाला है, हाँ लड़ाई क्यों प्ले बनाना पड़ेगा उससे। हाँ प्ले बनाना पड़ेगा, यस। यो व्हाट्स अप। यो सब पता चला ओपोनेंट का कोई बंदा बना दिया। ही कैन आल्सो बी एन ओपोनेंट एज वेल, राइट? यस। हेलो हेलो काका। हेलो ओपोनेंट बना दिया और साथ में हेलो ब्रो। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। यार सिर्फ भाई ओपोनेंट बन के उनके साथ ही रहा तो उनको पता चलेगा ना कि नहीं ओपोनेंट नहीं बन सकता वो, बस अपना टीममेट्स बन सकता है, जंगल ओपोनेंट नहीं बन सकता। नहीं यार फिर तो बहुत बड़ा डिफ है। उसका एबिलिटी बार के ऊपर 5 जो उसका 4 टीममेट्स है उनका आइकॉन आएगा, तो उस पे क्लिक करना और अगर लाइक मिनियन वगैरह बनना है तो उनके ऊपर 2-3 सेकंड खड़ा रहना है। वो बॉटम वाला टैरेट ही गया। बिली बिली गोइंग ह्यूज। ओपोनेंट का मिनियन बन सकता है ना वो? नहीं ओपोनेंट का मिनियन भी नहीं बन मिनियंस तो सेम ही होते हैं ना ब्रो। अभी मैंने नहीं पर ब्लू और रेड नहीं, वो रेड ही दिखेगा सामने वाले को हमेशा। अरे बट फिर एलिस का वो बच्चा कैसे बन गया था? मैंने को तो क्लिप देखा था सामने वाली एलिस का। दफेरी वाला का भी देखा है वो मैंने। सामने वाली का नहीं हो सकता यार, चांस ही नहीं। या तो कुछ बग या कुछ होगा। या तो एलिस था या तो वो था, वो कुत्ता कौन है वो जो और 3 कुत्ते। मुझे पता आप कौन सा वाला बोल रहे, ड्रैगन के पिट में गए थे उसके बाद। अच्छा व्हेन ही बिकम्स दैट एनिमल सॉरी अपना साथी वाला कोई बन गया तो उसका एबिलिटीज मिलेगा? नहीं बस शक्ल से वो लगेगा, ऑटो अटैक इनके जैसे करेगा, पर एबिलिटी उसका होगा। बट जब वो अपनी एबिलिटीज यूज करती है ना तो उसकी एनिमेशन नहीं दिखती फिर, इसीलिए लोग चेंज करते रहते हैं बार बार। तो ये जैसे Q या W कुछ भी फेंकेगा उसका एनिमेशन नहीं दिखेगा सामने वाले को। तो पता नहीं चलेगा उसने क्या फेंका है क्या नहीं फेंका, सीधा स्किल शॉट गिरेगा सर पे। You've got nobody the fun character there. Still no real TP, so Elk is just going to get to work away here. All solo gold too. I mean, that's one of the और क्लोन भी बना सकता है। They're just putting everything into his pockets. And let's be honest, where else would you want it? Elk has been smurfing this world. तो कर रहा है बढ़िया है, वो नीचे का भी टरेट गया, ऊपर का भी टरेट आपसे भी नीचे गया। फर्स्ट टर्रेट का वो ज्यादा रहता है ना, तो वही सीन रहता है, इसलिए सब लोग फर्स्ट टर्रेट पहले निकालने की कोशिश करते हैं। 475 गोल्ड है कुछ ऐसा। He was insane on the Kaisa. It feels like it's highlight reel after highlight reel after highlight reel from him. And I think it's incredible to see his journey through. Kind of thought, oh, hang on. Oh, cancel हो गया। Problem over here in the mid lane. Xiaohu trying to flash away and stay alive. Does barely get out there, trying to use the Fate Seal to escape the Skarner, but the Impale was too powerful, so Flash also had to be committed. Weibo keeps their mid laner standing, but the top lane tier 1 turret can't tell the same tale as Elk is going to collect even more money for himself. But if you do get the tier 2 Terra on bot side, which is likely for Weibo here, they're going to get a ton of gold, like 5 grubs. They demolish गोल्ड में BLG के 2 बंदे आ गए बस। हाँ अभी टरेट मिल गया ना, बॉट का टरेट जो सेकंड टियर रहता है वो 700 गोल्ड देता है, तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है वो। तो सेकंड टियर ले लिया। यप, तो इसीलिए वो गोल्ड में अहेड हो गए अभी, ऑल्दो इक्वल हो गया अभी। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, लास्ट ईयर भी सेम ही मैचअप हुआ था। अच्छा सेमीफाइनल्स में कौन जीता था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर WBG जीती थी 3-2, बट हैवी अंडरडॉग्स थे, अभी भी हैवी अंडरडॉग्स ही हैं। मिड लेनर चेंज हो गया, लेकिन BLG का पहले यगाओ था, अब नाइट आ गया, और वेबो में स्टाई खेल रहा था टॉप, वो चेंज हो गया और जंगलर चेंज हो गया। Crazy information right here. कल का भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई मैच। कल का तो सब लोग बोल रहे सबसे बेस्ट मैचअप होने वाला है। या इनसेन होगा वो भी। Weibo would love to grab this fourth one from the tier 1 turret up here on the top side. Shun continuing to try. डर ही नहीं है भाई, डर ही नहीं है।
बिल्कुल डर नहीं है। उसको स्किल कहते हैं चार्ली भाई, स्किल जो आपके पास नहीं है। भाई मैं भाग जाता हूँ, इतने अगर देख लूंगा भाग जाऊंगा मैं वहां से। अल्ट कर दिया ब्रांड, शायद मरे। पकड़ा गया, डर गया। And again, Xiao farming down in bot, and it's Bin who has committed his teleport. Yeah, Bin committed the TP to mid to force Xiao off that mid lane. For Chinese teams ये बहुत स्लो गेम है। हाँ मतलब पिघल के लग नहीं रहा था कि स्लो गेम होगा। हाँ वही, बट वो लेन स्वैप ने पूरा मेटा फक कर रखा है यार, नहीं तो लेन में किल्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं। अब गेम्स थोड़े मैक्रो हैवी हो गए स्किल से ज्यादा अर्ली। रेड टीम को देखो लेन का वो लोग नीचे रखा है। अब फाइट सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे होती है, जैसे इसके लिए होगी, ड्रैगन्स के लिए होगी। Oh fuck, Tarzan बहुत low है। Onto Tarzan, this is what you were talking about earlier, Azael, the ability to chunk the enemy jungler out and make it so difficult to then honestly contest a fight. Exactly, that's the thing. I mean, I think traditionally lethality Varus, isn't scaling as well, but when there's squishy targets that have no sustain, it's very, very difficult sometimes. You hit a Q or two on the brand, he can no longer fight. Xiao and Light are going to be Smaller stacks दिख रहे हैं, हाँ 132 पे अभी। They're going to be able to heal some of that back up, but it gets very difficult, and I can see a world later on where Elk hits one piercing arrow on Tarzan. भाई भूगी तू तो बहुत खेल रहा है ना स्मॉल्डर आजकल। ये कैसे करते हैं? जो दूसरे का जो लगाया हुआ वो है, उसको स्विच कैसे करते हैं? क्या समझा नहीं मैं। जो ग्रास जो होता है, जो आपके पास ट्रिंकर होता है, आपके पास हमेशा डिफॉल्ट येलो होता है। जो आप लेवल 9 पे ब्लू है, वो आपको रेड पे स्विच करना है। फिर जब वो यूज करते हैं तो दूसरे का वार्ड दिख जाता है, वरना आप 75 गोल्ड का क्या कहते हैं विजन वार्ड कह के खरीदना होता है, वो डालना पड़ेगा। He didn't have teleports, so they were never going to fully commit to it. I think they're just trying to keep them honest and say, you need to keep the rest of your team here, just in case we were to fight. So they're buying that time for Bin, allowing him to try to claw his way back in. And again, just kind of buying time for Knight as well to scale up. He's now set off to his side lane to keep himself safe, knowing that Weibo have to go for these resets. So as long as you're able to keep check of Weibo, you're in a good spot as BLG. But with Rift Herald now, they can open up on this mid lane, get another tower for themselves. Top lane tower is a stiff breeze away from falling over, and it means that then suddenly you're playing off of tier 2s and find it difficult to contest these upcoming objectives. हाँ अभी 5 मिनट तक और फाइट्स नहीं होने वाली। Yeah, I agree. It can really get tricky, and we'll see. One of the things, though, definitely working for BLG is the fact they took these couple early dragons. So if they want to play it slow, Soul is not forever. Weibo doesn't have exactly. Weibo doesn't have a way to say you must come and fight us. Besides the Baron, which is of course way riskier than just being on a Dragon Soul, where you're not taking so much damage from the objective. So if they feel like we're not ready to fight, Bin's just going to go to the side lane. Knight's going to go to the side lane. They're going to keep pushing waves, keep farming and farming and farming until they feel they are prepared. So it's going to be on Weibo to try to force their hand here a bit, I really feel, and put them in a spot where they're finding picks or they're forcing plays that BLG have to respond to. And that's where I think the downside of their composition is. It's really difficult for them to पाजी आपका स्विगी जोमेटो लाइफ टाइम पता नहीं वो वीडियो किया था ना रेबेल ने, उसमें याद नहीं मेरा कुछ 3 lakhs कुछ तो था शायद। If he's got to contest mid wave, how the hell do you get in? So I think this is where it gets difficult for Weibo Gaming to push the game forward, and I actually think this is where BLG, having this motor kind of correctly identified, that Weibo are going to struggle a bit here. We are now 30 seconds past the point of this being the latest first blood at this tournament. वो कोई मरा नहीं अब तक? हाँ बे, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड है दो, क्योंकि फर्स्ट गेम है ना सीरीज का, बहुत इंटेंस गेम है भाई अभी ये। सेकंड थर्ड गेम में सब खुलेगा, बट अभी ये फर्स्ट गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोग के लिए। Blue team is doing good. दोनों ही अच्छा कर रही है एक्चुअली। BLG में जो स्मॉल्डर है वो स्केल हो रहा है, जब तक वो फ्री फार्म करता रहेगा वो लोग ट्रेड ले लेंगे। बिन को भी डायरेक्ट मिल गया। स्केलिंग वाइज राइट वाली टीम बेटर है, क्योंकि कलिस्टा आउट स्केल हो जाती है। He's only 200 gold up now after the tier 2 gold all goes into और एक टर्रेट मिल गया। Elk's going to take the tier 1 mid as well. So the gold very, very close. It's really where they want it. Mid turret बहुत important है actually. When you talk about a really, really slow game, the one champion that always comes to everyone's mind in pro play is, I wish I had a smolder. One team does.
Smolder, Nasus, just put all the stackies everywhere, man. you know? It's 20 minutes in, you haven't fought yet. Who do you want? Smolder. Well, he's also about 50 stacks away from hitting that critical point. I mean, at this rate, we might have him hitting his execution threshold before we get an honest-to-God team Maybe that's first blood. That's how they do it. That's I will cringe. QSS आ गया यूनिक का. Flowers just got the faraway look. He's like, not like this. That should not be the state of the game. We'll see. By the way, guys, if you have any question game के बारे में काका से पूछ सकते हो. ये भी like 10+ years से game खेल रहे हो. Like सारा casting जो अपना community matches वगैरह को होते हैं सब यही करते हैं. These are in-house pro. काका की शेकिंग आ रहा है. अरे मां कसम भर दिया. कहाँ गया वो? 20 साल बाद गायब हो गया बे. ब्लाइट स्टैक्स बढ़ गए अच्छे खासे. अरे बाप रे. And that guy is squishy. Deletes him off the map. 2 शॉट हो गया वो. 19.5 minutes into the game for first blood. यार रेनाटा मेरे को बकवास लगती है बे, लेकिन सपोर्ट. लेकिन वो टीम फाइट में बहुत अच्छी है यार. और अगर एक को भी बचा लिया और उसको रीसेट मिल गया ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग चैंप है. उसका वो कैसे वर्क करता है वो मेरे को समझ में नहीं आया. जैसे समझ तू खेल रहा है, तेरा चैंप मरने वाला है ना, तो वो बेल आउट डाल देगा तेरे पे और फिर तेरा एचपी बार ग्रे आउट हो जाएगा और धीरे धीरे कम होके तू मर जाएगा. बट अगर वो ड्यूरेशन में तुझे किल या असिस्ट मिल गया तो यू विल लिव. ओह अच्छा okay. समझ गया. तो वैसा रहता है. तो इसलिए कलिस्टा के साथ अच्छी गई. कलिस्टा से तू फाइट करेगा, रेंट टैग करके कर लिया यूज, बेल आउट हो गया तो सरवाइव कर जाएगी. अच्छा मतलब के लिए असिस्ट मिलना पड़ता है. ओके समझा. हाँ के लिए असिस्ट जरूरी है और वही ड्यूरेशन में चाहिए, नहीं तो फिर यू डाई नहीं है. समझा. अच्छा ये बंदे ने परफेक्ट बोला. क्लोव जैसा है बेसिकली. समझ गया. ठीक है. हाँ क्लोव जैसा ही एग्जैक्टली. बट यू कैन यूज इट ऑन अदर पीपल. समझा. राइट. उसके पास नॉकबैक्स भी है, उसके पास यूएस भी है और उसका अल्टी मेरे को मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत स्लो ट्रैवल करता है ऐसे लगा था. हाँ बट तू अल्टी से आर फ्लैश कर सकता है फास्ट उसके लिए ना, कास्ट के लिए. अच्छा ओके. तो वो भी है. प्लस वो काफी सारी पूरा ऑलमोस्ट फाइट्स में पूरा मैप कवर कर लेता है ना वो, इसलिए बहुत हाई वैल्यू अल्टीमेट है. राइट. फाइट होने वाली है अभी. 3rd ड्रैगन आ गया. Let's go. Okay, Shun tried to tunnel through the wall there, see if he maybe could have been able to catch Breathe out. We are at our 3rd Drake of the game, spawning now. BLG with a very slight gold lead. Everybody's got all their summoners ready to go. Neither Crisp nor Elk. 10 बार क्लोन लगा के. Now BLG on the retreat. QSS as Weibo pushes up. QSS is gone, so is the Fate sealed, and Bin is on the flank. BLG holding their line just fine for now. Not really under a whole lot of extra pressure, I would have to think. To be honest, damage बहुत है भाई वेबो पे. लियांड्रीज ब्रांड. BLG continuing to just play this very safe, very careful. Another little bit of snot coming out from the Smolder there. The poke. Smolder stacks कितने? Fuck so close. As Mom roars in. 211. A whole lot more to find. Breathe still taking a little bit more poke damage now here too. Weibo still छोड़ देंगे ड्रैगन आई थिंक. not winning out in these smaller trades. But Jax is now trying to circle in around them. That's why Weibo were so hesitant to try and engage. The Jax had disappeared on bot. Now he's on, pushing that wave once more. And Weibo, they need to make a call, but the lack of engage again is hurting them. The poke from BLG is insane. And it's 220 stacks on Smolder right now. This champion is about to take over to superpower as BLG continue just shooting the poke back at Weibo. Shun now going to trade a little bit with Shun, who has to reset. There with the फ्लैंक आ रहा है नीचे से. Now you're going to have a TP coming in from Weibo. हाँ बट वो पॉपी खड़ी है बीच में आ गई. मैटर कम करेगा. घुस गया. आ गया. ओ फाक्स जंगलर उड़ा दिया. ड्रैगन गया. राहुल जंगली मिला. जैक्स मारेगा. कसम फट गया. Oh my God, Weibo actually जीत गई. कमबैक इन रियल भाई. क्रेजी हो गया. 1 HP पे गया, खत्म. ऑन गया. वो ही मर गया. अरे नहीं भी. मर गया. मरेगा. क्रेजी. ब्रांड है वो, मारेगा. ब्रायरन गया. Oh my God. तो फॉर कॉन्टेक्स्ट BLG को कभी वेबो ने हराया नहीं है. सिर्फ लास्ट ईयर वर्ल्ड सेमीफाइनल में हराया था और आज भी वही हो रहा है. अच्छा. अदरवाइज एक भी बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 3 कुछ भी नहीं जीते हैं वो लोग.
क्रेजी लोग हैं भाई बहुत। मैं तो इस साथ पिकअप्स भी नहीं किया। ओ मैंने तो किया है बट आई हैव चोजन BLG। ये गेम हो गया खत्म। या आई थिंक दे विल 3-1 या 3-2 जीत जाएंगे। दे आर वेरी स्ट्रांग। बेस्ट ऑफ 5 में अगर ड्रॉप करना है गेम तो यू शुड बी ड्रॉपिंग फर्स्ट गेम, उसके बाद में नहीं होता है। दिस इज ग्रेट दोस्त ने SKT उसके बाद जाता था RNG उसके बाद उसको उड़ाया कैसे? मतलब उसका एबिलिटी है क्या कुछ? पॉपी की अल्टीमेट है वो। अगर वो छोटा चार्ज करते तो वो बस नॉकअप होता है, लंबा चार्ज करते तो वो लोग दूर चला जाता है जिस डायरेक्शन वो हिट करती है। ग्रैंड डैमेज तो इनसेन है। ऊपर का स्कोर समझा दो सिर्फ भाई, ऊपर का स्कोर फर्स्ट वाला जो है जिधर 4 लिखा है वो है टरेट्स, कितने टरेट्स मारे हैं वो टीम ने, उसके बारे में कितना गोल्ड कमाया वो टीम ने, उसके बाजू में किल्स 4-1 जो है वो किल्स आई थिंक एक मोबा में सबसे वर्थलेस स्टैट्स होते हैं, वो ज्यादा मैटर नहीं करते मेरे लोगों को पता है कि जीजी हो गया। हाँ ये गेम सेंटर में किल्स है ना, सेंटर में किल्स स्टैक्स एंड ऑल, तो कमबैक करना पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है हमेशा पॉसिबल है। बट ये सब टीम्स को जब लीड मिल जाती है ना तो वो थ्रो बहुत कम करते हैं। हाँ वो फिर बहुत मुश्किल से थ्रो होता है। जैसे अभी भाग रहे पॉसिबल है, पहले भी वर्ल्ड्स में लाइक 10-15 हजार गोल्ड लीड भी टर्न अराउंड हुई है बट वो बहुत रेयर सिनेरियो है। ओ खत्म। QSS बच जाएगा शायद वो। नहीं मार दिया, क्लेंस ने बचा लिया। क्लेंस अल्ट ई टाइम बाय कर रहा है वो अपनी टीम के लिए। अबे तुम लोग बहुत पीछे हो क्या शायद? अरे भाई मैं तो आईफ्लिक्स की स्ट्रीम देख रहा हूं यहां पे। खत्म। अच्छा पोक बहुत है भाई उन पे। ओह माय गॉड भाग गए। And now, you look at where the gold is, it's really all about Tarzan. So BLG are going to try to fight away from this brand. If he cannot be a part of the fight, you still have great opportunities. And Knight now 260 stacks at this point. He's 10 seconds का डिफरेंस है सिर्फ भाई आपकी स्ट्रीम और हमारी स्ट्रीम पे। अच्छा तू ही स्ट्रीम कर देना यहां पे भी। मारो आईफ्लिक्स को, स्टिक करती है। अच्छा हां 2x कर देना, 2x कर दे उसको। कर ले। And this makes it easier for BLG again to just try and slow down the pace of this game. Get Bin into a Baron buff का भी आगे होएगा I guess। Knight continues to stack. भाई लाइव स्ट्रीम में कितना आगे जाओगे आप? I just feel like as long as BLG can hold their battle lines, not overcommit to हो गया बस इतना ही। easy angle for an engage, Varus is going to keep poking. We're going to have Nico continually poking. We're going to have the rapid fire eventually completed, and Knight is going to be continually poking. And it's going to be so frustrating to deal with that on the Weibo side because you don't have that rally, you don't have the Alistar, you don't have the instant go button. They kind of have to give you a bit of an angle, or they're just going to be slowly whittling you down. And I think that's why we can see the redemption starting to be built by Crisp, realizing, hey, I भाई desperately वो need ब्रांड to deal बहुत with दर्द this देगा smoke. टीम फाइट में। But the longer as it says it goes on, you then just get more of like the burn coming through. Burn कर देगा ना। हाँ प्लस लियांड्रीज प्लस लो है उसके पास ना, तो इन जनरल ब्रांड बता वो अनोइंग है टीम फाइट में बहुत ज्यादा भाई। मतलब वो माइंड फक करता है दादा वो है। दूर हो जा मुझसे। ये इतना स्टूपिड है भाई कि तू इवन मिनियन वेव पे मार और सारे चैंप्स को भी लगता है। हाँ Seeker's arm guard for Tarzan is a huge one. Mikhail's Crucible on Crisp to get rid of some more of that engaged CC potential on BLG पे फाइट हो सकती है। एक्चुअली बहुत अच्छा पुश कर लिया है जाऊ ने, फ्लैंक पे टीपी कर रहा है वो। या ये फाइट होने वाली है, अच्छी फाइट है। क्रिस्प अल्ट बच गए। बहुत डिले किया शायद वो उसका बेंच ही वेट कर रहा था ना, बेंच नहीं नाइट से वेट कर रहा था वायरस का। And that could be critical. Maybe they can find an angle with a flash from Breathe or something on tonight. But that's the poppy ult down from ओरे भाई यहाँ पे होगी थोड़ी। नहीं गया ड्रैगन गया। to come into this, but Weibo, they've already snuck भाई मैक्रो वाइज वेबो बहुत अच्छा खेल रहा है फिलहाल। Nicely done from Weibo. Now Fate Seal. Shahu wanted to go in. ना एज ऑफ नाइट है ई आउट बच जाएगा वो। कितना सारा डिफेंसेस बंदे हुए भाई। सिर्फ एज ऑफ द नाइट भी है वायरस पे। या क्लेंस पे क्लेंस मार रहा है वो।
बट उसके समनर स्पेल्स चले गए ना दोनों, तो बहुत स्क्यूज। और नाइट का भी फ्लैश समहाउ बर्न हुआ है अभी। they just इनको प्ले बनाना होगा फिर 2 मिनट के अंदर। 5 Cleanse doesn't matter much. The fact that they are able to go toe to toe consistently, match on these tempo plays, which they just completely fell behind on in playoffs, is incredible to see. Way more stepping up here. I agree. I mean, we were talking about this. How many snacks is Smolder at? We went back and watched a lot 297 in those 6 games they played in playoffs. 3 of them TP के नीचे लिखा है। wins. You know, BLG was very dominant in many of those games, but Weibo absolutely going toe to toe with them here. तो स्मोल्डर खेलने मजा तो बहुत आता है, स्टैक करने में मजा आता है। हाँ, मजा आता है। बहुत फन चैम्प है। मैं इतने गेम्स हारा हूँ ना सोलो की में, बट मुझे मजा आया बहुत। फिर भाई का चला था जब स्ट्रीमर कब चल जाते हैं। मैं तो स्मोल्डर खेलूंगा, आप लोग पिक करो। मैं चला जाऊंगा स्मोल्डर में, आप लोग पिक करो। बेस्ट है मतलब वो। पैर फैला के खेलो वे में भेज दिया। ये अच्छी फाइट है एक्चुअली। जाओ पे अल्ट फ्लैश आ रहा है। BLG कंटेस्ट नहीं करनी चाहिए आइडियली। Ben is looking though. He gets out though. He might end up dying. Oh, grenade Yeah, पकड़ he's लिया। going Yeah, he's dead. down. Beautiful getting grenade burned art, as well. भाई। Oh no, he's out. He's out. बच गया। So close. And Baron also disengaged resets. निको पे जोनिया नहीं है। भाई स्मोल्डर का डैमेज देखो आने लग गया है। ओए जाहू। मर गया। Oh भाई। Varus from the side. अरे ये खींच लिया। Nice. भाग गया। Oh, that game turn हो गया। Baron जाएगा। Nice. They let this Smolder scale, right? So it's going to be very tough now for them anyway. Oh, hi Madness. Hi Ravina. One of our other in-house caster / guy who delays my deliveries. Hello. ठीक है। ओए चुरा लेता। It's a long back and forth fight, but BLG do take it. और क्लोन के साथ फाइट करने लगे ना। सेकंड हिट टीपी किया इसने। So much control over the Baron pit for BLG, and Weibo slipped up pretty big. It was just that one moment. I think ये बिन देख पूरा का पूरा घूम के उसने पकड़ लिया उसको। पूरा घूम के नहीं, TP'd back in for the fight. He backed off after he got caught off. He went to base and TP'd back in. टार्सन उसको मार सकता था ना शायद। नहीं। That was an excellent Skarner flash all. Catches the support with the same flash also. That was massive from him. Elk of course nailing arrows over the wall. क्या है पिकाचू का टोप क्या है? This is O2 right or no? This is O2 arena or no? नहीं, अब पेरिस में है। Adidas arena. Okay. O2 के तो फाइनल्स हो गए थे। हाँ finals yeah. फाइट करने वाले हैं लोग। स्मोल्डर के लिए कितना स्टैट्स होना चाहिए आइडियली? लाइक 225। 225 पे हाँ मतलब उसका सब कुछ एक्टिवेट होता है। जाओ। ओए गया। अरे बच्चा गया। भाई क्या बच्चा है। टार्जन अल्ट है अभी भी। अल्ट एंगल नहीं मिल रहा उस बेचारे को। ओ भाई इतना बड़ा डैश मारा हो। अल्ट किया ना इसने। कलिस्टा अल्ट है वो। So Kalista you can just उसको बचा लेता है। you can pick up your support, bring him to you, and the support can choose where he wants to go out, like in a range outside. It's an arrow जैसा मस्त। You sacrifice yourself, but we crack the base. It's a handshake deal that BLG will take. ये तो टर्न हो गया यार। बोला था टर्न होता है आराम से। Especially if you have scaling champs, right? So it's easier for them to turn. Meanwhile, down here in the bottom lane, you can see that tier 3 turret collapsing there to the minion wave. So now it's both bases. अभी भी बहुत क्लोज है, लाइक गोल्ड लीड सिग्निफिकेंट भी नहीं है वो भी। अभी किसी का भी गेम है अभी तो। honestly
everybody still trying to keep these lines held as we approach this fifth. स्मोल्डर नहीं है फाइट में, वायरस पकड़ा गया भाई। ओह बहुत impatient हो रहे हैं। निको अल्ट No Nico ult for fight though. Yeah. Mother नहीं, comes this in. is easily fightable for WBG. बहुत सारे 3 अल्ट डाउन है। A whole lot. Weibo forced back, but honestly still pretty high on health. Knight and Bin, DPS Chris. Chris takes a massive chunk of damage, and Weibo have to be so careful about भाई स्मोल्डर मार रही है भाई। as the Cloud Drake is secured by Elk and BLG. Weibo continuing to try to get निको मरी। themselves advancing BLG. Xiaohu engages. Zonius. या लेकिन बहुत कुछ निको पे डाल रहे हैं। Nice. बच गया पीछे बिन मरेगा। जमा हो गया। Oh, nice flash Q. He's still dead though. Yeah, he's dead. He's dead. गया। He won't और get नीचे वो ब्रीथ ने पूरा नचा दिया भाई उन्हें। भाई ये लोग घान किए ना, क्या किया है? घान घान ये वाले फाइट में गंदा घान क्या होता है? मतलब घान मेरे को भी नहीं तो पता। मतलब हक दिया। अच्छा अच्छा ठीक है yeah. अल्टीमेट्स यूज हो गया ना फाइट के पहले ही। Just before because that Garrus got caught out a bit earlier on in the fight. They had to burn so much just to save him, and the mother of Smolder didn't do much before it started. They have a very difficult game to play here where they have to work as the primary engage. They're making it happen. It's scrappy, but it's being pretty effective. Especially for Xiaohu on a champion he's been criticized on this summer. Yone was not his pick, it was the banana combo. भाई xiaohu क्या खेल रहा है यार। To BLG so effectively, having great moments to understand when he needs to pop back. Hopping in onto उसने QSS जल्दी यूज कर लिया था। just don't have the damage to kill Breathe. The fact that the Yone's gone backwards means that they're able to turn on towards Bin as well, and Bin just doesn't have the damage to take on Weibo. No, and I mean, in a number of these fights, we're seeing Bin on kind of a little of these solo missions, right? Yeah. You know, he's over there without the support of the rest of his team, and it's just not going to work out. It cost him his flash, it cost him his Zonias, and he ends up going down anyway, as he couldn't take down Tarzan, didn't even get Tarzan's flash either, and gives up both those key abilities. And it's what you were talking about back at the beginning of the game, back in draft too, Azael. This hasn't felt like raid boss Bin at this Worlds like we've seen in the past. This game as well, back at the beginning, back during the lane swap being set behind. Yes, he's done a good job coming back into the game. Yes, he's now 1,500 gold ahead of his lane opponent in Breathe, but still not finding those angles, not being that. He's 77 हो गया। It's night and day. He should be fine इसलिए। ओ मर गया भाई, इसने जोनिया नहीं किया। my god. नाइट xiaohu बेल आउट बेल Bail out. बच गया। भाई क्या था ये? Turn. भराभरी गेम प्ले। अबे नहीं नहीं माँ कसम भाई Fuck. क्रेजी। ऑन को भर सकते थे अभी भी। ना स्मोल्डर है ना। किसको भर सकते थे? ऑन को निको नहीं, स्मोल्डर खड़ा है, वो 2 क्यू में मार देगा किसी को भी। भाई 404 स्टैक वाला स्मोल्डर है, उसका डैमेज देखना है अभी। प्लस लियांड्रीज भी बन गया है भाई का। बट ये 4v5 था, 4v5 के लिए बहुत क्लोज थी वो फाइट। The ult from Elk is there to follow it up. Xiaohu's trying to turn this around, and the bailout does. xiaohu क्या बच्चा है भाई बेल आउट से। They had the McHale's as well on one of the stuns there. Xiaohu barely survives. Yeah, the sidestep from Knight at the start of that fight was so crucial because क्या खेला है भाई। the smolder down, and then Weibo, the rest of them show up and they can barrel Nico over will- BLG, but ठीक भाई सोल पॉइंट समझा दो। मितुल भाई पूछ रहे काका जी, काका सोल पॉइंट समझा दो। कौन मितुल पोटैटो मॉन्स्टर पूछ रहा है? नहीं, मितुल गुप्ता नाम का कोई बनता है। सोल पॉइंट मतलब जिस भी टीम के 3 ड्रैगन है, 4th ड्रैगन होने के पहले वाला ड्रैगन है सोल पॉइंट। हेलो मैनर्स भाई। Hi Berserky. Hi, Berserky. हेलो। So currently BLG is on soul point. ये से मैं कुछ खा रहा हूँ क्या भाई? सॉरी मत करो भाई, भूख लग रही है। ये भी क्लोज है, दोनों टीम सोल पॉइंट। वैसे जुन No, दोनों पीछे नहीं है। नाइट बहुत डैमेज दे रहा है भाई बैरल स्मोल्डर का लेके डैमेज, स्मोल्डर का डैमेज देखो तुम एक बार। बिन फाइट में भी नहीं है, वो नीचे स्प्लिट कर रहा है। भाई साहब टार्जन मार सकता है या And now they even get their soul Drake also. नॉट येट, अभी बैरन है।
स्पॉन हो क्या जाएंगे BLG? शायद। हाँ नहीं BLG will get it. BLG 100% will get this. कितना दिख रहा है टाइमर ड्रैगन का? दिख नहीं 20 रहा। 20 seconds. फिर तो गया। Am I blind? Where is it? Top right. टॉप राइट पे वो Oh, Just below the White live. wave से नहीं दिख रहा। Yeah. okay, it's covered by the Discord thing. That's why. Yeah. GG है क्या ये? या उस गेम है वो मिनियंस निकाल रहा है। अरे बेचारे को ले दिए। वो minions निकाल रहा है, ये उनको निकाल रहा है। They don't care about minions. They'll take it anyway. They have enough already. दोनों कैरीज है इस गेम। GG। Fuck, what a close बिल्ली। अरे भाई शुरुआत का फाइट के बाद लग नहीं रहा था। वो इसमें भी नाइट है, इनके वैल्यू टीम में भी एक नाइट है। हाँ ना, BLG के वैल्यू में भी नाइट है एक्चुअली। अबे 88 VIP कौन सा कंपनी है? बेटिंग वन? चाइनीज कोई होगी यार, हो सकता है। वेबो भी टैप टैप है, टैप टैप वेबो। It's from Alibaba. Okay. And don't you worry, we got a whole lot more worlds heading your way right after this. Oh, it's a membership club loyalty program. Google is the best friend, है ना रवीना? Exactly, bro. कुछ नहीं मिलता तो मुझे गूगल में जाना पड़ता है, you know. थिंक स्कारनर बैन होगा नेक्स्ट गेम। हाँ, he had a bunch of good ults. फाइनल्स का ओपनिंग अच्छा होगा ना? क्रेजी होगा, ओ यार। क्रेजी। कल का ट्रेलर क्या होने वाला है, मैं वो वेट कर रहा हूँ भाई। हाँ, fuck। कल का ट्रेलर इंसेन होने वाला है। भाई मैं तो ओल्ड स्कूल में देखती थी जब डायरस पिल्लो लेके आता था स्टेज पे। Yes. Pillow fight. यार जब वो रिटायर किया था भाई बहुत इमोशनल था वे। मैं तो रोया था, मैंने तो स्ट्रीम देखा था। एनए बॉयज के लिए तो बहुत इमोशनल राइड था वो। मैं जब TSM ज्वाइन किया था ना, मैंने उनको फर्स्ट चीज बोला था कि वो जो जैकेट उसने वो वाला वो उनका वैर्सिटी जैकेट था ना, वो मैंने भेजने बोला था। मिला? कुत्तों ने भेजा नहीं कभी, बट मैंने बोला था बस। मिला तो मैं वहाँ पे आती हूँ आपके घर से चुराने। बहुत सेक्सी जैकेट है वो, बियर्सन डबल लिप्स सब पहन के घूमते थे। हम लोग को बोला था वेबसाइट से जो चाहिए बताओ, तो मैं देखा और मेरे को वो जैकेट मिला है। बोला यही चाहिए मेरे को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो दिए क्यों नहीं फिर? अगर they told you to take it from website. सिलेक्ट तो कर दिया था मैंने, आया नहीं कभी। Double Lift बोल के I think he's one of the people who's also allowed to stream worlds अभी। Double Lift is allowed. Double Lift is allowed. IWD को डालो बेटा, सारे washed up player को यहीं पे डालो। क्या मतलब? washed up player का मतलब? What do you mean? क्या मतलब? Sorry. Very clean players. Very clean players. Upcoming pro players. Sorry. I was surprised king है भाई अभी तो। Cadril is king. I was surprised IWD got it, bro. Yeah, I was surprised too. Like, what BB scene में बोल के, like, what is he still doing? No, because he doesn't get LEC rights at all. He doesn't. He does Wait, is he? No, for LEC he gets for LCS, he gets for LCK, and I will dominate. I will dominate. So he gets for LPL, but he doesn't get LEC. He does not. He only does watch-alongs for LEC on his separate website. He sent a interview. You saw his interview? No, I didn't see that. A funny interview. He sent a funny interview to the Worlds this year. भाई अपने सेट भाई ने तो कुछ नहीं दिया, बस बोला मेरे को चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है लो। क्या? ये लाइसेंस टू डू वॉच पार्टी। Co-stream. हाँ। Co-stream. यार लेकिन ये लोग को लोअर ब्रैकेट डालना चाहिए यार।
इनका From फॉर्मेट quarters. बहुत घटिया है भाई। हाँ अभी इनका भी बहुत फॉर्मेट मेरे को घटिया है। टट्टी लगता है इनका फॉर्मेट, नो डाउट। वर्ल्ड्स इनका फॉर्मेट सिर्फ वर्ल्ड्स का एक्चुअली पता है, MSI में फिर भी डाल दिया है लोग ने लोअर ब्रैकेट, हाँ। बट वर्ल्ड्स में नहीं डाला है, सो दैट मेक्स नो सेंस। तो तुम बिगेस्ट टूर्नामेंट पे नहीं डाल रहे हो लोअर ब्रैकेट। मतलब बताओ भाई, मतलब ये हारेंगे तो लोअर ब्रैकेट नहीं है? नहीं आउट है, सीधा आउट है, सिंगल They're out. एलिमिनेशन। They're out. तो मतलब ये जो बाहर चल के गए वो घर गए सीधे? हाँ नहीं अभी नहीं बेस्ट ऑफ 5 के बाद। नहीं अभी ये बेस्ट ऑफ 5। तो ये लोग प्लेऑफ्स में कितने लेते हैं, मतलब कैसा वर्क करते? टॉप 4 टीम्स फ्रॉम एवरी रीजन। ओके दैट्स हाउ। प्लस वाइल्ड कार्ड रीजन से एक आती है, जो हमारे रीजन से 1 या 2 जाएगी, और समथिंग लाइक दैट। तो वियतनाम की 2 टीम्स गई थी, वन ऑफ देम मेड इट इन। ना आई एम सेइंग इन द प्लेऑफ्स। I'm saying in the playoffs. You're talking about from like quarterfinals onwards. Quarterfinals, right? yeah. हाँ तो quarterfinal onwards ही 8 ही टीम है। 8 टीम। 8-4-2। जो Samsung Galaxy ने बनाया था, they made 2 teams, right? What was the second team called? White and blue. Samsung white, Samsung हाँ blue। उसी के बाद तो रूल बन गया था 1 और 2 टीम नहीं चलेगी। वो तो दोनों ही टीम क्या स्टैक थी यार। हाँ बे। Is this a new prestige skin? Nightbringer Yasuo? Yes, I got it. I played Yasuo, died 15 times but won the game. At what cost? 0-15 power spike. हाँ मैं तो स्ट्रीम किया हूँ, मैं तो पावर स्पाइक के लिए रुका था Yasuo के 0-15 वाला। Cool guys don't look at explosions भाई। 0-15 तो मैं तो 2 महीने से खेला ही नहीं इस गेम को। अरे मैंने पिकिंग करना भूल गया। मैं वही बोल रही थी काका को, मैंने भी नहीं किया इस साल। मैं अपना चेक करूँ कहाँ पर हूँ मैं। मैंने किया है 1 point। हाँ लीडर्स मैं टॉप 5% पे हूँ फिलहाल। वी आर हैप्पी विद दैट। ठीक है, नए चैम का ट्रेलर लग रहा है। ओह आर्केन का शायद। अम्ब्रेसा भी तो आ रहा है भाई। डैशेस थोड़े कम लगे मेरे को, अलग से और 2 डालने चाहिए थे उस पे। कम लगे थे। ओ ये वॉलवेट वाला ट्रेलर है। अब तो सीन हो गया, रिफ्ट में टेरेन ही क्यों रखना है जब सब डैश कर सकते हैं। अबे मतलब लीग मेरे को लगता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहा है गेम को। थोड़ा एक हाथ बीच में कैसे कोई तो सिंपल पॉइंट ऑन क्लिक वाला चैंपियन दे दो बस, ये मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। एक हाथ ऐसा साल में एक बार में भी। हाँ मतलब तो दिया ना पिछले 2-3 साल में यूमी आई है बढ़िया, खेलो आराम से पैर फैला के। क्या भी सिंपल था ना भाई। यूमी तो वो लोग ने वो अपने स्ट्रीमर बैटल के लिए रिलीज की थी ताकि स्ट्रीमर्स खेल पाए। सब टीम से एक यूमी हमेशा जाता था। खेली भी तो सबने फिर। भाई पर हमारा टीम ने सबसे कम खेला है यार यूमी। सेरेफिन खेले थे फ्लेक्स भाई। बताओ क्या फ्लेक्स करना पड़ रहा है लाइफ में भाई। हमारी टीम ने सबसे कम। पूरा वीडियो बना दिया उसने। मैं सेरेफिन का अल्टीमेट का वीडियो बना दिया सीधा। अच्छा ये लड़की है क्या, ये लेजेंड नहीं? हाँ औरत है भाई, लड़की नहीं। एकदम दादी अम्मा। So the love interest of Jace in Arcane, her mother is Ambessa. No spoilers है ना? Yeah, I did. That was not a spoiler, eh? That is in Arcane season 1. Bro, to be fair, I haven't even seen season 1, right? Because I made मुझे देखना है because I have to talk about Arcane. These are our representatives, guys. They do not watch the show. ठीक है. Assassin ने भी नहीं देखी है. Assassin doesn't even know how to play the game to begin with. I've been here since Quinn What release. trailer is this? Umbrella ही है। It's a young age, I think so. They're showing. क्रेजी उसका पूरा स्टोरी बता रहे हैं।
अभी ये तो बहुत लीशन नहीं बफ है लग रहा ये। ये लीशन नहीं लग रहा उसका विचक्राफ्ट नहीं क्या कहते हैं वो किंड्रेड Sorcery? नहीं अबे यार Viego? नहीं वो गेम है ना Kindred. दूसरा अरे Witcher. विचर का Okay, that's where we reached, okay. no just look at the boss bro he looks like Lesion the mask and everything मैं देख रहा था चैम का, मैंने इसका पैसिव देखा, पैसिव पे क्लिक किया, उसका डिस्क्रिप्शन पैसिव देख के मैं समझ गया औकात के बाहर नहीं आएगा खेलने को। औकात के बाहर हाँ मतलब आप स्मॉलर खेलो सही है। हाँ मतलब मैं देखा पैसिव में इधर से डैश उधर से नहीं हो पाएगा। क्या लीग के नए चैम्प्स कितने भी अच्छे हो भाई, पुराने चैम्प्स अभी भी बहुत ब्रोकन है। मैलफाइट आएगा सामने 3 आइटम वाला, तुम कूदते रहो 10 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। गैलियो आएगा भाई, मस्त बैठेगा। अभी ये कौन चैंपियन भी तो रिवोट हो रहा है? स्वेन हुआ है। स्वेन तो हो गया है ना। नहीं स्कारनर परसों पढ़ रही थी मैं। स्कारनर वापस, स्कारनर नेक्स्ट आई थिंक स्वेन हुआ है अभी। ना ये सब चैम्प्स तो ऑलरेडी अच्छे खासे हैं। एनी को रिवर्क करना चाहिए। क्यों लगा ये सेकंड बंदा डॉक लगा मेरे को, मतलब एनी को बोरिंग लगता है खेलने को। एनी सोलो क्यों के लिए, लेकिन वो बहुत एफिशिएंट है भाई, तुझे तो पता ही है, तू तो बहुत खेला है। बट पता नहीं होने के सामने अभी इतनी अच्छी नहीं लगती एनी जितना पहले लगती थी खेलने को। बट वो लेनिंग फेज में मजा नहीं आएगा। तो एक मैलिग्नेंस बना, एक 8 दवा योने रोएगा भाई वो। हाँ वो है लेनिंग फेज में, लेकिन एनी का मजा आता था भाई वो रेंज वेंज के साथ। हाँ वो तो है, वो मजा नहीं आता थोड़ा। हाँ 100%। बट टीम फाइट वगैरह में तो अभी भी वही स्टूपिड ही है, फ्लैश 8 दबा दो जीत जाओ। मतलब तेरे को याद है वो टाइम जब डोरेंस ब्लेड लेके जाते थे एनी पे उसके रेंज की वजह से मिली के सामने? यस इरिटेटिंग थी लेन में एनी। तू खेला था ना उसमें बॉम्बे में टूर्नामेंट में, एनी सिर्फ मिड पे। Skarner, I feel like he was really consistent. And then it's good that you mentioned Bin, because Bin got his Jax, and he came up with some critical picks on Knight. 2 critical picks on Knight. You know, after they lost that dragon fight, I started to get kind of worried. He finds Knight in mid lane to buy them some time, and then be right back. Excuse me. I was so hyped after that one. I know. I will say, I feel like I lied to you. तो आप लोगों ने रैंक वैंक चालू किया, किसी ने नहीं किया? हाँ मैं किया हूँ। कहाँ कौन सी रैंक पहुंची? मेरा रैंक बहुत डेंजर है। कौन सा? आयरन? अरे आयरन 4 है, समझे ना? आयरन 4 है। आयरन से तो ऊपर ही हूँ मैं, ब्रॉन्ज हूँ शायद। आई थिंक लास्ट फ्लैट 3 हुई, उसके बाद खेलना बंद कर दिया मैंने। नाइस। अरे सच में तू आयरन है? हाँ भाई आयरन है। हाँ बट एक बार गेम के बेसिक समझ जाओगे ना, तो क्लाइम वगैरह करना इतना हार्ड नहीं रहेगा। ये गेम में क्लाइम करने का बेस्ट वे है कि एक चैंपियन पकड़ो और उसी को पेलो अच्छे से। हाँ वही है। हजबा कोई नहीं, आप बोलो मैं बूस्ट करती हूँ आपको। एक सेकेंड, हेलो फ्लैट फ्री क्या ही बूस्ट करते हैं ना आपने रवीना जी, उसमें बहुत सारी स्किन्स है। मैंने एक स्किन मांगी थी, एक स्किन जो मुझे नहीं आई है अभी तक। मेरा जैसे पेचेक आता है मैं आपको स्किन देती हूँ। दिवाली बोनस इधर जाएगा आज। दिवाली बोनस वो क्या होता है? हमने तो देख काका, हम लोग का दिवाली बोनस वो वीडियो है, याद है? कौन सा? असैसिन वाली। Oh my god. Kind of soaking up a lot of damage and then gets some crucial engages in the back half of the fight. The big thing for me, But League of Legends I think acquired taste है, थोड़ा खेलना पड़ेगा बहुत, फिर मजा आना चालू होगा। Then you will start hating the game कि मैं क्यों खेल रहा हूँ अभी भी। न्यूज़ आया कि परसों की स्ट्रीम देखी थी रवीना जी? नहीं, ओ श्रीमान भाई खेला था, श्रीमान डेविल के साथ। हाँ देखा था भाई, क्रेजी हो गया था बहुत। हाँ आपका योने देख के मेरे आंख चलाने का मन कर रहा था। देखो मैं योने छोड़ दिया हूँ खेलना, मैं वापस सेट पे शिफ्ट हो गया हूँ, वही बेस्ट है।
औकात पे आ गए। औकात पे। And so you see a lot of damage coming from the poke lethality. My influencers, guys. Absolutely. I have to say the aura on Ben is just, it's unbelievable. Let's अच्छा see न्यूज़ him आया with कि Ben जो in the लीग खेलते हैं walk-ins. उनका IQ रहता है 110 to 125 के बीच में. क्या बात Yeah, कर they're in the. Top They did a. 5%. They did it. Yeah, but that is a very small sample. They only did it for 200 players. 2000. Hey, 2000, hey, sorry. hey! Don't leak the whole info. Just take the good part, bro. What's wrong? कॉन्टेक्स्ट किसी ने नहीं मांगा था I read the entire thing. That's why. You should be boosting my influencers, bro, not telling the whole fucking chit chat. actually set up really well in this game, and I don't think it was necessarily a brief performance. It was just a team difference. हर्ष है तो सही, मेरा फ्रेंड ही है, देखो As Emily requested, हैं? Brave had फ्रेंड ही है तो गाना आ मेरा गया तेरा था? देख रहा हूँ। or 900 क्या? rather, that would have been too. उनका गाना आ गया पूछ रही हूँ मैं। आ गया, आ गया। Yes, मैं चेक करके आती हूँ। चमापुर। देखिए देखिए जमापुर। Did play very proactive. And this is why I'm super curious to see what happens. वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, डोंट वरी। रिलेट हम ही कर पाएंगे। It's okay, I Gamers only। support Harsh. I support Harsh जो भी। भाई, जब तू पैदा हुआ था तब से मैं गेम खेल रही हूँ, चुप कर जा नमूने। फिर भी रिलेट नहीं कर पाओगी। जमापुर के बारे में बोले तो They made sure that Breathe was in a good position. This is something that Weibo's बस been देखा, very good at हर्ष doing. नहीं समझा ना उनको जमापुर। However, when it did come down to the team fights and some of those map movements, BLG came out ahead. They did. They वीडियो देखिए क्या तुम? देखा देखा, अभी वही देख रहा था। डेंजर ना? विषय खोल कर दिया भाई। देख आगा, तेरे को याद है क्या बैन्स क्या थे फर्स्ट मैप में, फर्स्ट गेम में? फक इफ आई रिमेंबर भाई। ऑरोरा ट्रेन का तियान शॉट किधर से शॉट लिया हर्ष? क्या बोलते? ट्रेन का शॉट? मेरी स्टेशन से। नहीं नहीं, अंदर बैठ के। हाँ वो तो स्टेशन में ही लिया, मतलब ट्रेन पे ही लिया दोपहर को जाके। अच्छा। भाई मैं बहुत awkward हो जाता, मालूम है अगर ऐसा कुछ शॉट रहता तो ट्रेन में। भाई मैं तो बोल रहा था क्राउड के बीच में करूंगा भाई इस पे। हो जाता, क्रेजी हो जाता भाई, तेरे पे वो वाली चीज है ना, तू awkward नहीं होगा, मेरी फटती है लोगों में जाने को। बहुत ज्यादा शॉट्स हो गए थे। Brand was exceptional for them in multiple different opportunities, but it did end up leaving them then a little bit wanting. Something तो crazy होने वाला है ये मैच में। पिक बैंड्स मजा आएगा यार देखने में। बैंड्स हुए थे पहले, साइलस, रका, नैश, ओरियाना, ऑरोरा, माओकाई। ओके अच्छा, आप लोग वो पूछ रहे थे ना कि ये लोग अपने अपने लेन्स पे क्यों नहीं खेल रहे? काका समझाएगा, समझाओ काका। एक सेकंड रुकना बस, मुझे मेरे डॉग को बाहर निकालना पड़ेगा। चलो जाओ। मैं समझाओ। You do lane swapping just for objective basically in the beginning, right? So they just get as many places they want. These teams don't go for many fights in the beginning. They go for as much gold farming as they want. So instead they go for that. So they switch completely as that, and then they, after maybe the 5th minute mark, they switch back to their original lane. Yes. क्या हुआ? क्यों नहीं खेल रहे लेन्स में? Very much, too much, very much. ओए योने बैन हो गया। अरे सीन ये होता है कि फर्स्ट 13 में से आपको टर्रेट प्लेटिंग नाम की चीज होता है, जो सारे लेन्स के फर्स्ट एक्चुअली उसलिए नहीं होता, बस 13 नहीं, 14 This first character is Silas, right? Silas, yeah, on the left it's Silas, then it's Rakan, then it's your favorite Yone over there. That's no, Set is my favorite. भाई Yone नहीं। Okay, Skarner first pick होना चाहिए यहाँ पे, ideally. हाँ तो वो first 40 minutes उस goal पे Second one is Rakan. Okay. Kalista. Interesting. Which is unfortunate because Shehu actually looked pretty good. He just felt like he they are letting Aura be लेन स्वैप इसलिए होता है अभी कि अच्छे मैचअप्स सबको मिल जाते हैं खेलने, नहीं तो कुछ कुछ मैचअप्स में सामने वाला बंदा 30-40 CS 1-2 लेवल डाउन रहेगा तो फिर वो कमबैक नहीं कर पाता गेम में। बट लेन स्वैप कर दोगे तो वो सब much होती नहीं बिल्कुल। We're talking about like 3 in the top, 3 in the bottom, and nobody in the opposite side का। क्या? वैसा वाला। Like you go ना just to take, you swap sides, not swap lanes, समझ रहे हो? You go 3 people in the top to take the turret plating there, and you leave the नहीं, top but वो लेन स्वैप हाँ। प्लेटिंग के लिए essentially नहीं होता, वो that's just to avoid a bad matchup. What the fuck is this pick ban? 3 बैन होते हैं, फिर 3 पिक होता है। माओकाई ओपन हो गया। 2 पिक होता है। Ziggs लॉक हो गया क्या? लॉक हो गया तो स्मोल्डर बैन आएगा अभी सामने से। स्मोल्डर और जेस बैन होना चाहिए।
No, interesting. सामने They went वाली टीम Kalista सेम first. कैरेक्टर नहीं खेल सकती No, we can't. ब्रो In ये the तो फिर In the beginning of Worlds, when League actually started, you could have on the same side the same champions, but they changed that afterwards. भाई ये तो बहुत गलत हो या जाएगा फिर। ब्रांड क्यों बैन किया है? माओकाई ऑलरेडी पिक्ड है, आई थिंक उन लोगों ने हक दिया है ये। चार्ली आप लोग के इस मैच में इसलिए अलाउड था क्योंकि आप लोग को बहुत सारों को खेलना नहीं आता था, इसलिए हम लोग अरे बट ये तो बहुत गलत सीन है ना, अगर उसको कोई कैरेक्टर एक ही खेलना आता है तो पर यहाँ पे एक वो लोग they don't know ने एक उनको को अगर एक ही आता तो उनको पैसा नहीं मिल रहा होता अभी। लीग का हाईएस्ट $6 मिलियन कमाता है वो साल के, अगर उसको एक चैंप के ऊपर खेलना नहीं आता तो फिर फायदा क्या होगा? अरे भाई ये बहुत गंदा है। देख चार्ली भाई सीन होता है ना ऐसे लोगों को, लाइक जो हाई प्रो प्लेयर्स होते हैं उनको सारे चैंपियंस आते खेलना, मे बी नॉट टू द मैक्स लेवल पर जानना चाहिए क्योंकि कूल डाउन वगैरह होता है ना। You have not to play against the champions as well. और नहीं होता है तो बैन करो। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लब के सामने खेल रहे हो और वो स्नेक Ooh, बैग Narvan. आपको पता है 6 चेस बैन होना चाहिए आइडियली, बिकॉज़ एपी आ चुका है। I don't think Jace will be banned. Why would anyone ban Chase, bro? That's a waste. Because Knight plays it. It's not a waste, you know. It depends on who your top laner is, right? मुझे ऐसा लग रहा है ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस में से भी कोई सामने डाल दिया ना हमारे खेलने को, वो भी हमको भर के चला जाएगा। No, but that's because they've been playing League for a long time, ना चार्ली भाई आप इसमें। नहीं नहीं Come back, Sid भाई। अरे नाइट आ रही भाई आरी का मेरे को अल्ट का चेंज बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई एक्चुअली बहुत अच्छा चेंज है वो, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो इतना सिंपल चेंज है लेकिन इतना इफेक्टिव बनाया, मतलब आरी को उसका जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज है वो अच्छा खासा। Rel locked in. Lucian mid. Lucian? Yeah, Lucian mid. Mid, Elise jungle. Ooh, Elise. Did he Elise? Yeah, he got Elise. He picked it up. 0% pick rate till now. Maokai top है. What the fuck? They're cooking. They might have burned. They might have burned their food. नहीं नहीं भाई. Oh fuck. Oh Knight Syndra दो बहुत insane pick ban है भाई ये। Holy fuck. This is one of the guys that I, really respect playing the champion. As far back as 2020, I remember making a content piece on his Syndra. I watched every game of Syndra he played the entire year. अब होंगे झगड़े भाई। कोई क्राउड में अपना पूरा आईजी लिखा है ऐड भी बोल के। अच्छा ये लोगो प्लस 24 इज 2024 वाला 24 ना, या फिर उसका कुछ अलग सीन है? क्या क्या क्या? हेडफोन्स पे जो लोगो के साथ 24 लिखा है वो 2024 वाला। देखो ना वहाँ पे पीछे में वर्ड्स दिखा ना, वर्ड्स 24। ओके ओके ओके। वर्ड्स का लोगो है वो। Bro, I love that Elise pick actually. लेन स्वैप में डाइव करके मारते रहो भाई। माओकाई एलिस दोनों एग्रो छोड़ सकते हैं। Maybe we can engage on him, but he's not quite in range, and he's still in range of hitting you with the scatter. Spicy. Really making your job difficult. We haven't seen an Elise at Worlds yet, right? Crazy भाई, first pick बहुत first pick है। That can hit you from pretty far away that are CC reliant, so I think it will definitely be more of a front to back Secret style lab. fight, but I think it's a What good is secret adaptation lab? coming through. Yeah, this ये तो या तो बहुत अच्छे से जीतेंगे या बहुत कुत्ते की तरह हारेंगे वे वो। Champions like the Jacks that kind of want to No find in these between. angles, but you have so many different You sound like What is every that match. poster? What is that poster that she No, did? but because of their team को snowball करना बहुत जरूरी है, नहीं तो Otherwise they can't it's do much. unplayable. Another game that doesn't have first blood until 17 minutes if Weibo wants to have a chance. I feel like when you have Yeah. Lucian mid, Elise jungle, Kalista bottom again, So you many need to early strap game in. champions. You need to build some early Let's go. advantages and have these smaller fights and skirmishes early. And if you're thinking about Elise as one of these picks that is getting more popular online, it was actually buffed after this patch. So it wasn't until after the Worlds patch that those Elise buffs did come through. I'm very excited to see if we can make it work, though. All right, remember, log into your Riot account on lolesports.com and watch Worlds Live to earn exclusive Worlds emotes, I should do that. icons,
and Free caps, capsules. all sorts of good stuff in there. So log in, check it out, and I am so excited to see how Tarzan plays this, how Tarzan passed with this, and I like what you bring up as oh yeah, the buffs happen after this patch or whatever. Sometimes it's just enough to get people thinking about it again. Exactly. And you think maybe the buffs weren't even what I really needed. Maybe we were underestimating this. Yeah, absolutely. And Elise can run सीड भाई away ब्रॉन्ज with के the ऊपर game. का There's just चुपचाप so many वर्ल्ड्स things I देखो, wanna ठीक talk है? about, so many things I wanna watch in this game. I mean, there's two mid laners here that are, in similar places in their career trying to battle for that world championship, playing some of the most iconic we're getting spicy. championships Come for on. them. And Elk is gonna ना swap छोड़ना them पड़ेगा, on लेन this स्वैप mid होगा lane. वापस. But Breathe Tarzan, that top side is screaming out merc treads, and Ben could be really difficult to deal with No. when he does get those early merc This treads. is a bit too chaotic over And there. that's a 5v5 right there, भाई. फटी भाई क्या हो रहा है? Light. जमा हो Light रही gone, है। light gone. लियो ओ भाई लियो गया, ये ब्रीथ भी गया, Oh, ब्रीथ भी गया, that's fucked. फंसा Rachel has flash. He Orimo. was not there. Nah, this ये is होता है ना, disaster. चाइना का गेम ऐसे होता है भाई. हाँ. फर्स्ट गेम में वही बोलूं बहुत शांति थी. First कोरिया का गेम था वो. हाँ. सेकंड में उनको याद है भाई हम लोग चाइना से भाई एग्रो जाएंगे अपन. मजे. Now Light has no sums as well. Come back out onto the map, burn his TP, no flashes for so many of these carries, and it's an insane start. I don't like where Light is standing at all. ये क्या है? Look how he walks in. लाइट कहाँ चल के गए? वही तो मैं बोल रहा हूँ. Look at his positioning. क्या कर रहा है वो? रैप्टर पे क्यों इन्वेट किया? रैप्टर पे एलिस कैसे लेगी? That's very confusing. भाई ब्रीथ को मार सकते थे अगर पांचों जन उसके पीछे जाते थोड़ा. नहीं ब्रीथ के पास अभी भी फ्लैश था रे. माँ कसम कैसा बैठा है ये. Fighting over Raptors at level 1. That's LPL, baby. That's what I was gonna say. It's the LPL semifinals, and you know how much this means for both ये भी these ये लोग squads. वही बोल रहे Weibo सेम trying to चीज. get back to that World Finals for BLG, trying to right the wrongs of 2023. And I was डाइव होने वाला है when I बॉट पे. saw this Elise pick, I was like, man, I haven't seen Let's see that. how they भाई play मेरे को it भी out. लीग खेलने की इच्छा हो रही है बहुत. Missed something. No, the last Elise in ओ Worlds. ये क्या डाइव होने वाला है क्या? Yeah. I think he's dead. ओ भाई. सैंडविच कर दिया ना भाई तो. बहुत इजी है. टीपी निकाल दिया. फंस गए भाई, फंस गए मेरे को. मरा ना मरा निकल फंसा. जाएंगे. फ्लैश है उस पे. नहीं मरा और है. वाओ. 1-1. जाऊ आ रहा है. नाइस शॉट. भाई निकल गए ये लोग. तो एलिस का एक स्किल है ना जिसमें वो ऊपर जाती है, तो टावर एग्रो बाउंस करना बहुत इजी है. मतलब एलिस का टाइम बाय करना. उसका स्पाइडर टारगेट नहीं कर फॉर्म में. सकते उसको. हाँ. प्लस माओकाई का W भी सेम है, वो भी एग्रो छोड़ देता है. I mean, it's going to be so tough for them, but when you play Elise, you don't get to just sit back. No. If your first gank doesn't work, guess what? You better hope your second one goes better because you got to keep the pressure on. This TP really made it difficult. The CC on to कौन मरेगा? क्रिस्प मरा ना. क्रिस्प और on. the initial CC, so it's crashed नहीं, down Breathe into मरा the है. Q stun, into the counter strike. It's everything locking On up भी and तो मरा pushing ना? out really before the different team ना. Okay. It's kind of heartbreaking on either side. You can see the Weibo coaching staff not looking too pleased with the results of things, but it's still Elk getting a ton of CS on that bottom side. He's going to move back to this bot lane, being able to rotate up to start getting some of the CS on the top side as well. And you can already look at the gold that's opening up on the top of your screen as well. I'm just really interested to see how this 1v1 is going to go. We just haven't seen top lane Maokai in Flash नहीं है इस पे. How is the extended flash. going to go against मरेगा. Goodbye my brother. ओए Goodbye my friend. क्रेजी. हम तो घुस के मारेंगे. ये अभी क्विक 3-0 लग रहा है ये अभी. Yeah. It's easy Pass fire out. from Knight. Even the fact that almost didn't cover Crisp, so he couldn't even get any sort of bailout or anything, or some way to try and keep his mid laner alive. Yeah, and this is just critical on helping Knight crash that, so there's no way Chris can actually hold the wave and freeze it for Xiaohu. Means it's a clean reset for Knight. The wave will be pushing back towards him. Bin had that wave that he collected at his tower, and is going to be escorting in, and Breathe does not win this extended fight, but Light showing up, of course, means Bin is going to have to back it up. Exactly. The Jax can happily back away from that one. Not under any serious threat. Down 1,000 gold. A little bit over that. 5.5 minutes into the game for the super early comp of Weibo. Feels so tough to play. 20 seconds now until that first set of grubs spawns. Especially when so much of it is in Knight's pockets. We all और fight होने वाली है grubs पे. You hit this certain point in the game,
where it doesn't matter if they hit their spells anymore. They just kind of miss a few skill shots and then press R and you die. And it becomes so difficult, especially when you're playing something like Lucian, because Lucian can't sit back. Lucian has to be confident, has to be playing in the face of their opponents to be able to really get that damage done. So for these mid-range... What does that red bar below team names depict? Team names? Oh, that's kitne matches jeete wo log best of 5 mein. Weibo coming up to challenge for the grubs. BLG trying to get themselves away, flashing out of the range of the handshake. Weibo securing. अरे बेटे भाई साहब ओए भाई क्या बचा है कहां जा रही है गया ब्रीथ गया पीछे Ben is going to go. Okay, that's very well played. Holy shit. Bro. What? WBG back in the game. Tarzan ही वो तो wall मारा है उसको ही भाई. Top भी मरेगा वो dive होगा. Knight भी मरेगा. Yeah, वो dive होगा. Jun tried to go for something. I do not recommend it. No, he's out. He's out. Oh. And they just allows Knight to walk away as well. Knight भी बच गया. हाँ, but बहुत सारा farm deny होगा. And they'll pick up the next 2 grubs as well. 2 grubs that are left. That's great. We can see that got pushed in by Breathe. Bot lane wave is already shoved up. Top lane wave is already shoved up. It's a full court press, it feels like, for Weibo right now. They are really It's all about the kills, ramping up the pressure after that one fight. Honestly, they needed it so badly. Things were looking awful for this team that really wanted to get the gears turning early, but the grub fight turns it all around. They got that first grub. The other 2 still alive in the river right now, and you're going to see Tarzan make very short work of those. It's also the fact that if this game actually starts to extend into the later portions of the game, you're incredibly This is so well played. Breathe ने अंदर जाके 4 लोग को knock back किया है भाई. Let Xiaohu play really far crazy. he knows he can't be locked down. And on even Mahokai का wet dream है वो. On the top side, Breathe has already got L gets out but just comes back in, gets caught by webs of Elise, goes down as well. Which sets up then for the piercing light over the wall from Xiaohu to finish him off. And it's just these small interactions from Tarzan that really set up a cascading effect in that fight for Weibo Gaming. I mean, he played the fight very, very well, and you have to be able to be confident like that, to look for these aggressive moves on the Elise, to really try to stay ahead of the pace of the game. He's not going like the full-on old school, like Sork Boots rush, run around the map, just do nothing but gank. He is building AP, obviously, so your farming is definitely not bad. But it's very difficult, especially to play the fights out. इसको flash किया ना? ओए, how the fuck did that miss? अरे भाई. मर गया वो फिर भी but. How did it miss? Not sure, पता नहीं कैसे miss हुआ है वो. What the hell, right? भाई सब लेन में मौत है. अब लग रहा है ना Chinese game भाई. हाँ, अब लग रहा है. Going to be able to get a ton of damage onto this bot lane turret. ये क्या racism चल रही है यहाँ पे? नहीं racism नहीं है. Casually. भाई ये क्या है? हम turret भाई वो हाउस के नीचे हम safe feel करते वहाँ पे घुस के मार रहे हैं. They're juggling the aggro so well. हर यहाँ पे हम लोग safe नहीं feel करते. भाई यहाँ से तो 2 किलोमीटर दूर रहता मैं तो. वो लेकिन एक बंदा उसका डैमेज खा रहा है और दूसरे चढ़ रहे हैं ना उस पे, ऐसा कर रहे हैं. हाँ, तो that's called juggling the turret aggro. Weibo kept batting this against LNG. Like Light has been such a good player on it, but now Xiaohu putting some hurt onto Shun. But I think Light has been exceptional for Weibo, and getting to see him try to stuff on this वापस cancel करेगा. is definitely worth watching. And the show is kind of on the other foot now, because when you look back to last game, it was Elko had this massive gold advantage on the Varus coming out of this lane swap. He got so much plate gold. He was really the beneficiary of that early game, and this time it's Light who's in this commanding position, who's going to be able to get to an early Blade of the Rune King and potentially put them in a position to tie up this series. Especially when you're looking at, you know, a minute 40 until void groups. He gets the reset, he'll have... Oh fuck, he's dead again. Ready. He's dead, he doesn't have flash. Accept कर लिया उसने. They are putting a bullseye on his Tarzan को दे दो kill please. No. Please give it to him. Yes. No! Goes over to me. My man has 4 assists and not a kill. Of matching what BLG want to set up with. When you look back at playoffs, it was BLG pushing in with the Ziggs, turning around the ganks, and getting into a position where they could outrun Weibo on the map. But it's Weibo who are taking control right now, and BLG who are struggling to answer.
Should be fine. Has flash, has cleanse. It should be very fine. Nice Unless... ultimate, bhai. Nice ult by Renata. To clear some space and make it so Shun can't land the impale. Crisp and Light both escape. Yeah, Chris played that really, really well. Just walks up in the face of Shun, pushing him back, using that hostile takeover, prevents having to use a flash, prevents having to use a cleanse or anything like that for Light, which are much more valuable resources. And this is going to be the TP pushing out here from Bin down towards that bot side as Breathe was able to take a turret plate. He has just been pretty active on the map, and he is on much more of kind of just a playmaking champion. You're going to be frontlining, you're going to be looking for picks. It's not about the side lane, so it's okay if he's not keeping up in farm as long as he's active on the map. Yeah, and I think this is impressive to see from Breathe as well, because he's had a great Worlds. यहाँ से अगर BLG ने comeback दिखाया ना तो माना. No, it's not that far behind. Look at the goal difference now on the top, right? उनका comp late game के लिए. And what WPG wanted to try and snowball, and they didn't get Breathe ult and get out, bhai. Breathe. Breathe is going in, boys. He's dead. Damn. Breathe can no longer breathe anymore. बस कास्ट के लिए बचा भाई ये सब. Now they get all 6, Ray. God damn, all 6. And first turret, so that's great. Yeah, they're gonna get all the grubs, and they already took down that first tower. ठीक है, I think not bad. Jack's funnel हो रहा है. गंदा तरह से भाई. And it's really just going to be a tale of two lanes. Who can get more done with the advantages that their team have given them? There's still so much confidence in Bin that he can make it happen, especially on his signature Jax. And now he's got to show that he can be the difference maker in a game like this. It's also if you can draw multiple members of Weibo to deal with the Jax, it opens up for Elk. ये छोटा कैरेक्टर इसका नाम क्या है? Ziggs. वो बम फेंकता है. Game state, but I think they're in a good spot, right? You've already got a quicker reset. अगर तू सेट खेलने के बाद ये खेलने लग गया ना चार्ली. नहीं ये नहीं दोबारा बात नहीं करूंगी. मैं आपसे दोबारा बात नहीं करूंगी. मैं खेल ही नहीं सकता. अगर तू ये खेल के अच्छा खेला मैं मान लूंगा. नहीं भाई. But Zigzag ADC है ना, bottom lane player है ना. Mid भी खेलता. No, he can be mid. He was originally played mostly in mid, and then when the APC meta started coming out, he started playing as a ADC APC in the. Yeah, he was a mid laner. Then there was a huge Ziggs rework and a Lich Bane change. So उससे Cutie made like this funny video where he was like one-shotting towers. ये पूरा meta बन गया. What they want to get done in the game, and I just love to see that constant evolution of the meta, and I'm hopeful that it continues to work. Yeah, I already talked about how the Elise अरे भाई. Oh my god. Yeah, that 6 turret's grubs by the gone. way. that turret's gone. They're like Ziggs, you can make a turret disappear, so can we. They have void links. Now Weibo is playing very well early game में अभी. Turret लिया, dragon ले रहे हैं. Last game भी तो वही हुआ था. Yeah, अब scaling का difference हो ही गया है. Let's see if they can close this. They couldn't close the last game. That was the problem. They took so long. That by that time, the smaller was just so stacked up. What's up, Akshat? शिप में बिली Yeah, के वही ना good news. Smolder नहीं है game में क्या अभी. 150 million? Biggest threat Jax ही है. 150 million कैसे हो सकता है? Watching. Tarzan का Leandry's आने वाला है. Mastercard. 14 minutes on the clock. Lane economy snapshot. Thank you, MasterCard. You can see, man, it's all light all night. And Crisp right next to him. The second biggest. Look at the difference in the bot lane gold. Yeah, 2000 है भाई. He's moved in towards mid. You spent your timing window as BLG on that top side, and now On is already getting forced back, so you're just getting these waves in order now for Weibo to look towards Rift Herald. The cross maps are not coming through for BLG. No, they're not. I mean, it's been difficult, right? Because they feel like they are behind tempo, they are getting pushed in, they're worried about the Elise, so they're not Rift able also to they shut out get. these waves, and it's making it difficult. Last game में भी bot lane का third turret लोगों ने लिया नहीं. Normally, I don't think support gold is that big a deal, but at this point of the game, when it results in an item completion, like the locket, you don't have to take all turrets and everything. big in some of these early skirmishes, so you can just depend how you actually go for the end. Contesting this fight, and the question just becomes, you know, which side is going to scale better? Because BLG is very AP heavy, which is definitely a weakness, but at the same time, you have Elise, you have 2 short range AD carries on the other side, and it's really going to come down, I think, pretty heavily to execution. Yeah, I think the only one who really benefits is Breathe, because you can go for that something like a Spirit Visage, which then is super nice for getting that extra healing off of your passive and just becoming an absolute monster in team fights.
And for BLG, a lot of them, their fight will be front to back, apart from say like Bin. But if you can actually just have, you know, Breed stand in front of a Ziggs bomb or even a Scatter the Weak from the Syndra, it becomes way easier for Weibo to operate. Although they are a very short composition that still can be in range of a lot of that threat. And they're still going to have, you know, that difficulty on the engages, right? Because again, it's really going to be on Breathe, it's really going to be on Tarzan to be able to start up these fights, to have the confidence to go forward, find those picks. You know, Xiaohu and Light, you know, could even go towards things like a Maw later on in the game and have a lot of value there. Because if Knight positions aggressively and is trying to get those 100-0 plays, and you're reliant on a lot of that AP damage from Elk as well. Billy के अरे 150 million पागल हो गए क्या? The sustained damage of these double AD carries can really shine through. And especially if it's a Cloud Soul that Weibo can pick up, having that like Maokai ultimate into his speed up, being able to chase down people, can make things significantly easier for Weibo to start some of these fights. So you can already see the opportunities. Soul कौन सी again Cloud Drake? Wow. Out this game. It's just how do BLG disrupt that so they can enable a Ziggs to tear down turrets, so they can look for picks around some of these key objectives on these carries as they look to face check. And Weibo are feeling confident with their current state of the game. Nearly 2,000 gold ahead. Nah, Ziggs is not a champion abhi. Here in the enemy jungle. Yeah, he's definitely not. Minion? Yeah, definitely. Super minion at least, come on guys. Cannon minion. Oh, double team is in the top. It's great. Teleports coming in from both teams. Oi, bhai. You're going to see Xiaohu arrive first, but as soon as Knight shows up, he's got to fall How back. was first game? Aksaj very Weibo played very well, but Billy ने मार दिया बे. Weibo but बहुत अच्छा खेल रही थी. Back and forth, but शांत था. It was a very quiet game. 17 minutes like कुछ no first blood, very शांत game. Really anything cooking on either side. I But do think Xiaohu's teleport being down is better for BLG than Knights though, because you want this second game तो Stomp लग रहा है. side lane and being able to put pressure down, forcing him towards objective fights in like a minute's time and not being able to cross. Sid bhai, would you face 100 Teemo-sized Malphite? They also just have an extra TP, right? Because 100 Teemo-sized Malphite or one Malphite-sized Teemo. 100, I think probably best chances. Maybe वहीं पे है मेरे. Can easily go to a side lane, just wave clear against the Lucian and still be able to join the fight on a teleport. All right, we've got less than a minute until that next Drake is around. 1-1 means not really a whole lot of reasons to trade aggressively for those to feel like you have Watching to stop pro them. players miss BLG kill just shot needs is to keep pumping painful. the brakes. You have to think they'll just let this one fall away. Not that big of a deal right Makes now. them seem I human. think BLG's game plan is basically the same as last game. They just don't have clear scaling win conditions like they did last game. They want to play it slow. They want to use the Ziggs to buy time for the stacks to come through for Syndra, for Bin to become a real threat in the side lane where I don't think anyone can answer him this game. The question is, do you win 5v5 when you scale up, or do they have to hard commit to a split bush win condition? Because they don't have a Smolder, right? Like, it's not that same easy guaranteed win late game. Ooh, Knight doing the Syndra special, steal away the blue buff. Makes it a lot harder for your opponents to... Like, no, this is mine. Those smaller advantages, stealing away the mini objectives, but the Drake is live. Drake आ गया. BLG, exactly as we expected. Oh, ये तो They're बहुत just जल्दी backing करो. away. No need to fight for this. I think this is where you need to start just trusting that Knight can wave clear solo, especially when he gets towards the second items, and you start to stick Elk with Bin in the side lane, because if you have a two-man threat, Breathe can't really step up to the wave, and then... Sorry. Okay, flash engage. What reaction time, completely. Breathe can't really step up to the wave, and then suddenly... ये वाला कौन जीतेगा लग रहा है? BLG जीत लग रहा है. On teddy bear दिखा के चला गया बेचारा. He misses Shattering Strike, so Magnet Storm has nothing to connect to, and Xiaohu just cashes. Oh, my bad. Okay, dive हो रहा है क्या? I think just to prevent them from doing anything against this rift. So the rift goes down नहीं anyway. होगा. So much HP, not even close to dying here just yet, despite the fact that it is 6 grubs for Weibo. Thing is, if they get a kill here, तो Baron burn हो जाएगा. still have Bin, who's just kind of farming his way up on the side lane. yeah. So they are just fishing for that abhi. 1,000 gold lead, but BLG, the wave clear is insane. Okay, Light forced to cleanse. Oh, Light again. Flash. Knight doing a good job Flash maximizing and his cleanse counter burn weak both. to Yeah. put pressure on the Fed carry. And this is where it is tough for Weibo, because you don't have as much of a side lane threat in Breathe, which is why having Xiaohu kind of answer for Bin, or sorry, answer on the side lane is your best bet. Xiaohu Rather see can't Xiaohu really not answer. match He Bin, though, actually have Breathe can't just at wave all. clear against this Jax. So then you have another point of pressure on the map that you can then release Xiaohu from to move mid, to draw members of BLG away so they can't just wave clear on turrets all day.
crowd is getting into it, man. I mean, I'm loving this second game much more than the first at this point in time, just because we have so much more trading. Because there's kills. There's kills. Yes, because there's just kills. Just admit it, you're a play-by-play. I enjoy the kills in League of Legends. It is a PvP. Just play-by-play. That's crazy, I like it. We are rooting for Bilibili Gaming because the word Bilibili sounds fun rather than saying Vivo. Vivo bolne mein it's like a really shit word, but like just say try try karo bol ke Bilibili Gaming. तो बोलने में मजा आता है मेरे को. बाकी प्लेयर्स का कुछ लेना देना है नहीं मेरा. मेन अपने को देखना है SKT वर्सेस Genji. और yeah, so I would really like BLG to win. It's a very fun name, Bilibili Gaming. मजा आता है बोलने को. You can see Light has that Hex Drinker. I do think we're going to see both these AD carries with full maw by the end of the game. But I think it's great to see people finally taking notice of Light. He's been to the main stage with LNG back in the day, but never really got towards the playoffs to show what he's really capable of. Now coming on towards Weibo, he's really got to show how strong he can be. Both last year and now at this tournament, I think ultimate था. वो पकड़ा. मर गया. गंदा पकड़ा. अरे बाप रे. अरे भाई. And that's the pick they were looking for. Yeah, it's a big pick in the side lane. Let's see how much more BLG. भाई स्कारनर भी मस्त बना दिया है बे रिवर्क के बाद लेकिन. हाँ बहुत annoying champ है. He is that guy that is slowly scaling up that can really take over in a 5. बहुत tanky है, बहुत CC है. He's an AD carry in the LPL because there's so many good ones, but he really does stand out in a very stacked crowd. You're also going up against Knight, who is the kingmaker in the LPL right now, and it's plays like this working with Shun that set BLG up for success on side. They get the tier 2 tower, they get more gold in towards this Syndra, and it's getting tougher and tougher for Weibo to try and answer back now with how well BLG are starting to play on these sides. I'm going to be really interested to see if BLG want to contest at this next dragon, because the third dragon I always think is such an interesting inflection point. Because that puts you to soul. भाई वो क्या फेंका इतने दूर से? अल्टी उसका अल्ट है. Hextech bomb. He did that just to और मिडिल में ज्यादा डैमेज होता है. बिंग्स अभी बिंग्स बोल रहा हूँ. जिग्स अभी अचानक से इतना ज्यादा डैमेज देगा ना, देखो अभी तुम लोग. फोड़ेगा लोगों को. हो रहा है. Nah, he was 150 gold shutdown bounty आ गई उसपे. Fun तो किया. He was like put out of the game in the early parts a lot because of what is done to him. But other than that, yeah, he's gonna be a lot right now. नहीं, if this goes to 4 items, तो 4 item पे BLG जीत जाएगी. वही जाएगा अभी. From Weibo's comp, if Bin really gets rolling, the gold is like almost dead even also. From BLG between the Ziggs and the Jax is just huge. It really is, and that's where I kind of go back to a point that you were making, Rob, where it becomes about, I think, overloading the side lane, because Maokai can hold the Jax. Jax is not going to kill the tower in Maokai's face. You have enough wave clear, you're just going to be able to stand up, tank a little bit of damage, knock down that wave, but if you send a second member, if you overload that side lane, all of a sudden you're losing towers, all of a sudden the base is being threatened, and Weibo can get pulled apart across the map. WBG just short range on BLG has good pick plus poke potential. Soon I'm sure. Oh, backseat gaming तुमको क्लिप करना पड़ेगा, नहीं तो ये हार जाएंगे ऐसे. कल आ जाना जेंजी वाले मैच के लिए. रैग भी आ गया. I think Weibo are just worried about that overload play happening, so they're trying to match on this top side as the waves start to get pushed out. But that was just giving. Oh, they're looking for the angle with breather. Flash है, W है. Resets though. There's no real TP ward for him to go to though. And look at Elk, I mean, he just uses the ult immediately on the wave, right? They're going to keep pushing out these waves. They're not going to allow Weibo to group in siege. It's always going to be cleared out. It's always going to be about buying time for Bin to make something happen in that side lane. And we can see Ez is very standard. And the Drake goes to the Weibo. But we're going to need to see that magic pen come through for Knight and Elk very Are you always in your caster mode or something? Not fight the third dragon for Weibo, so no, Weibo is on just soul like points now. facts. They have got to get to as powerful as they can before this soul. This is how I talk, Ravina. Okay. फिर मैं join कर सकता हूँ. Yes. You can all join Discord. जो भी chat में. Syndra TP out किया, flip हो रहा है गेम भाई. Smite fight तो नहीं होने वाली है. Kalista है. Yeah, this is gone. Oh my god. They're gonna give up a lot. Light को मिल गया reset.
रिकॉल करो, निकलो यहाँ से, माँ कसम। भागो। Run, Tarzan, run for the hills, my man. Goodbye, breathe. तब मैच में था। He's gonna buy a lot of time. He gets a heal back. What time? And he's out? I think he's out. He's out. No. Oh bro, the side step यार all वो TP आ रहा है वापस। Wait, this is not over. Jau 1v3. No. निकाला एक को। That's not what. That is not at all what. नहीं, that's not what. TP gone, flash gone, and जब दो को निकाल जाता वहाँ पे वो वर्थ हो जाता है, बट that's not what. ज़्यादा ही चैट बन रहा था वहाँ पे वो। भाई ब्रीथ ने कितना, सोचो अगर ड्रैगन भी चोरी हो जाता, माँ कसम मजे ही आ जाता। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत बैरन मुश्किल करते टाइम अगर ड्रैगन चोरी हो जाता तो मजा ही आता देखने को। बहुत मजा आता। Weibo managed to get Shehu out and Tarzan out, but Bree भाई साहब, such a good job of buying time. भाई बहुत टाइम बाय कर लिया, लेकिन बहुत। वो कितना टाइम मतलब fancy. ये बहुत TP करके टैलेंट लेना चाहिए था इंस्टेड। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज लगती है भाई, कोई मरता ही नहीं है। जो भी पूछ रहे हैं, आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ डिस्कॉर्ड में बैठ के देख सकते हो। बात नहीं कर पाओगे बट कर सकते हो अगर स्ट्रीम नहीं देखनी तो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है, चैट में भी है। अक्षत क्या बोल रहा है? स्टक इन ट्रैफिक, डिडंट नो टुडे वाज द मैच। क्रेजी क्या बात है? क्रेजी ब्रो, क्रेजी। ओ भाई वेट, वो बच गया? मर गया। That guy died. On is dead. Jun is low. Jun survives. Oh nice. And that's why Knight is known for his Syndra. BLG breathing a sigh of relief in this game. They managed to get the play Go on next. top, turn around that play GG, on go top, next. and now they can start to rip through these Go next game or go next Worlds? so good in these last two engagements. Go next. Absolutely have the pressure that they're putting on Light. He's been a complete non-factor in the 5v5s. They get in अरे on भाई every साहब, time. टार्जन को क्या डैमेज पड़ा गंदा वाला अभी? देख ना टर्रेट को जब पड़ रही है। अरे भाई कसम, ओए शील्ड क्रेजी, बहुत क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी। And now they just get to set up again on sides, but you see here Light. भाई स्कारनर कितना अनोइंग है यार, fuck. The immediate impale and then the crash down coming through from on to send it through. कितना अनोइंग है स्कारनर, किधर से भी आ रहा है, किसको भी लेके जा रहा है। और उसका जो ई और आर दोनों सप्रेशन है, तुम क्लेंस भी नहीं कर सकते। On is the only one that falls, and it's these choke points that are so crucial for BLG. सपोर्ट को बोला मिकेल्स लेके आने के लिए। I'm sure लिया होगा उसने, बट मिकेल से भी I don't think हटता है, सिर्फ QSS से ही हटेगा। Not sure though। नहीं तो वो ले लेता। नहीं, I think वो change हो गया है। You can't Mikel's Malzahar ult वगैरह, I'm pretty sure। No, you can cleanse it, but the damage will keep going on. He won't be suppressed. Elk's on his death cap. He's working now on that void staff, and he is really starting to hurt. Also, you're about to get the लाइट को निकालना पड़ेगा, लाइट पे ही है जो भी है। Okay, stack हो गया है। It's a lot of damage. Just look at Breathe. How much time he has bought over there. Passive. Losing out in the health trade. Nobody dead So on the other hand, Shun does not look very good off the trades. Tarzan वो mines का wait कर रहा है वहाँ खड़ा होके। And this is with drag spawning in like 7 seconds. Yeah, I think this drag is gone actually. Nice damage though. Ooh. Plant भी आ गया लेकिन he's good. No, they're gonna fight for this. Ults क्या है? Breathe पे नहीं है, बाकी सारे ults available है। सामने भी सारे हैं, okay. Reset. Look at Bin. Ah, he got spotted. Claim their own blue buff. Breathe पे flash Don't है, look yeah, at he has Bin. flash. Don't look at Bin. And the Ziggs together. It's a lot of poke. It's a lot of damage. Breathe in the Drake pit. Infinitely. Tarzan भी spotted है. Poke W, nice.
The bouncing bombs again, connecting onto Crisp. The vulnerable enemy targets in the back line. Crisp down to 20%. Breathe left alone. Pin jumps over the wall here with a counter strike. Yeah, now you can. Nice dead. He flies the wall, but On's got the kill with the ignite. Hostile takeover. Oh! Let's go, Light! Light! Oh भाई. You're the only light for this team. Lights out. बस ये Oh, की win, निकाल ले win, भाई. win, win, Nice win. cleanse. Nah, unlucky there. Nah, that's game. That's game. That's an ace plus the Cloud Soul for That's the game. side. GG. GG. They said fuck soul. Light has bought his Mao, but I don't think he will be able to use it once. अक्षत बोल रहा है sit by Mikhail doesn't remove suppression, you have to build QSS. Yeah, correct है. वही मैं भी तो वही बोल रहा हूँ रवीना, लेकिन रवीना ने बोला कि नहीं हो जाएगा ये वो. हाई लो प्लेयर्स बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. रवीना मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है भाई यहाँ पे. No, no. अरे you're talking to someone who's not watched Arcane. क्या फायदा है? You shut the fuck up, Mister. I'll give you your clip tomorrow. I gave it to you, did I not? Only took 1 year. भाई Absolutely. क्या क्रेजी खेल रहे हैं लोग, बहुत क्रेजी खेल रहे. उनको चांस ही नहीं देते घुसने का उस टाइम पे एंड में. No, by the way, reveal the clip that you wanted. Just for that other thing. Kemper just told me the day before that. Oh, that clip was for Harsh, by the way. He's right here. Yeah, I know. The old clip. Oh, Harsh भाई वो जिनका clip इसने बनाया था Badness ने. मैं थोड़ा टार्जन की तरह नहीं खेलता हूँ. हैं रवीना जी? जंगली अब मोगली की तरह खेलता. टार्जन की तरह. हाँ. मोगली की तरह, मोगली की तरह. भाई ये सेज ने सच में कमेंट करा है क्या ये? हाँ था भाई, मैं भी पागल हो गया लोग. माँ कसम. He's on the point. This is the crown. उन्नीस सौ 95 में क्या? थर्ड गेम. वैसे कोई यूएफसी देखता है? थोड़ा बहुत. नहीं, आज बहुत इंसेन कार्ड है. क्या है, किसका मैच है? मैक्स हॉलोवे और वर्सेस इलिया टोपुरिया. वो भी अच्छा है. टेकर वर्सेस हमजा चिमाएव भी है. बहुत इंसेन मैचेस है आज. किसका नाम नहीं लग रहा? लड़की का. इलिया टोपुरिया. हाँ. Just बताओ, मुझे याद नहीं, but do you instantly get the capsules or like after a few hours? क्या? From watching? For what? From watching. From watching. Drop I think it after a मिलता है. bit. नहीं, ड्रॉप इंस्टेंटली मिलता है. वैलो भी तो ड्रॉप्स होते हैं ना, तो वैलो वाले भी बता सकते हैं आई थिंक कितना होगा. No, instantly नहीं मिलते well. Sometimes you get it in your account, sometimes it comes a bit later into your account. मैं कह रहा हूँ रेवन, अगर हम LOL की स्ट्रीम्स कर रहे हैं तो LOL के मर्चेस या फिर कुछ हमें भी होना चाहिए ना यार. मेरे हिसाब से LOL का कोई, क्योंकि मैंने वर्ल्ड का जब फॉर्म भरा था तो उसमें मेरा एड्रेस मांगा था, तो लिखा था वील सेंड यू गो वर्ल्ड का मर्ज, तो मेरे को आया नहीं है अभी तक. छी भाई. रुको सिड भाई रुको, आपके लिए ना मैं सुबह राइट मीटिंग में मंडे को मैं डायरेक्ट सुनाती हूँ. और चार्ली का क्या? और हम मतलब हम पागल हैं. चार्ली का क्या? चार्ली का क्या भाई? अरे देख रहे हैं भाई, देखो भाई ये हो रहा है हमारे साथ. फेवरेटिज्म चल रहा है. छी भाई. आईप्लीज भाई तो रात के 5 मतलब सुबह के 5 बजे तक लीग खेल रहे थे. भाई फिर थॉट्स ऑन वर्ल्ड एंथम. अक्षत चैट में लिख रहा है कल से आ जाना स्ट्रीम पे. Honestly, such a huge Linkin Park fan, but it didn't
I didn't like the world's anthem so much, honestly. I mean, it was okay. I didn't dislike it, but I didn't love it. Like जो जैसे पहले गाने बनाए वो लोग ने. Legends never die. हाँ मतलब obviously उसने बार बहुत हाई सेट किया है वो सब गानों ने, but वैसा हाइप फील नहीं हुआ मेरे को. राइज भी कितना सेक्सी गाना था यार. Yeah, actually. कल बजेगा Legends Never Die 100%. वो जो भी ट्रेलर वीडियो आएगा फेकर का उसी के लिए बना था ऐसे लगता है. उसी के लिए ऑनेस्टली. अबे क्या है बे, मतलब अनरियल है बे काका, अनरियल है. अनरियल है, सच्ची बता रहा हूँ. क्रेजी है भाई वो. एंड देन वो हाइप ट्रेलर के बाद में लास्ट ईयर उसने वो प्ले किया है भाई. लाइक यू डोंट मेक दीस थिंग्स अप. इट इज स्टूपिडिटी. ओके सेट भाई, आप खेलते हो लीग और वैलोर दोनों रिलीजियसली. किसका शॉप ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है आपको? किसका योर शॉप आता है ना वैलोर लीग दोनों में. कौन सा ज्यादा? You mean the night market stuff? Yeah, the night market. Yeah, but you're asking a guy जिसके पास 1 million RP है. हाँ तो तो मैं तो सब खरीदता हूँ, जो दिखता है खरीदता हूँ मैं. भाई साहब क्या मतलब हमको एक सेट की नहीं मेरे का ले लो. एक सेट की स्किन मांगी थी मैंने, एक सेट की स्किन बस. वो तो तेरे को पूरा अकाउंट दे रही थी. अरे भाई अरे मैं खुद का अकाउंट ऐसे मतलब अच्छा बनाना चाह रहा था भाई. सेट के स्किन बहुत डेंजर है मालूम क्या चार्ली भाई? अरे पर दिया नहीं ना ब्रो. बहुत मजा आता है भाई स्किन के साथ खेलने. सही में सेट का स्किन छोड़ो, अभी देखो मैंने मर्च की बात करी. सिड भाई के लिए मर्च जा रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है हर्ष. यार मेरी क्लास लग रही, मैं जा रही है. जी भाई वैसे काम करो रवीना जी तो क्लास लगेगी. हाँ ये हुई ना बात बोलने वाली. जो हो रहा है वो कर रही हूँ मैं, ठीक है. जो हो रहा है मैं कर रही हूँ, जो नहीं हो रहा है मैं कुछ नहीं कर सकती. मेरे पास लीग का मर्च पुराना वाला बहुत पड़ा है. जो टीमो हैट अभी तुम लोग जब वो फर्स्ट रिलीज हुआ था जर्मनी गेम्सकॉम में, मेरे पास वो वाला ओरिजिनल हैट पड़ा हुआ है घर पे. 2011 या 2010 में रिलीज हुआ था वो. मेरे पास तो सिर्फ एक ही मर्च है. क्या कहते हैं इसको? क्या? इसका नाम भी नहीं पता. ठीक है. माउस पैड. मर्च बेस्ट वन सो फार. वॉरियर्स बेस्ट वर्ल्ड्स का सॉन्ग आई थिंक वॉरियर्स वाज गुड, बट लेजेंड्स नेवर डाई इज अ क्लासिक मेरे हिसाब से. Yeah, honestly. भाई मेरे जिम में बजता है वो. हाँ मतलब हाँ it's everywhere. मैं भी सुनता हूँ. मतलब तुम बजाता है ना. नहीं मैं वो राइज और वॉरियर्स तीनों सुनता हूँ जब भी मेरे को मोटिवेशन चाहिए होता है तभी. मतलब कुछ ऐसा एनर्जी चाहिए होता है, मैं सुनता हूँ तीनों गाने. नया प्रेस्टीज स्किन तो डायना का है. वैल का भी अच्छा है एक्चुअली. डाई फॉर यू काफी अच्छा लगा था, 2 साल पहले आया था वो. हाँ डाई फॉर यू भी अच्छा है. डाई फॉर यू भी अच्छा है. उसके 3-4 रीमिक्सेस है जो इतने क्रेजी है डाई फॉर यू के. In my opinion, the female version of Warriors is a synonym purpose doesn't give the hype like the original. You mean जो ट्रेलर में यूज किया था? नहीं मेरे को ट्रेलर वाला भी अच्छा लगता है. जब वो क्लासिकल टाइप का म्यूजिक बजता है ना, मैं दिखाता हूँ. आई थिंक तुम इसकी बात कर रहे हो ना? नहीं चालू तो है, चल रहा है. वॉरियर्स सिनेमैटिक वाला, ये वाला पार्ट मेरे को बहुत पसंद है. रुको दिखाता हूँ. आई विल शो यू. ये वाला पार्ट मेरे को बहुत पसंद है. यहाँ पे जो पिकअप करता है ना. डाई फॉर यू कौन सा वाला गाना बोल रहे हो? वैलो वाला भाई. वैलो वाला बहुत अच्छा. लीग में भी है कोई? नहीं वैल वाला काफी अच्छा था वो. सुनो ये पार्ट मेरे को बहुत अच्छे लगा. यहाँ से सुनना बस, पिकअप कैसे करेगा गाना सुनो बस.
मस्त लगता है मेरे को ये पार्ट, बहुत प्यारा लगता है मेरे को ये पार्ट, बहुत अच्छा है ये। और अभी जो पकड़ेगा ना, इसका पीक देखो अभी। क्रेजी ये, और एक मतलब और ये वैलोरेंट का ये मेरे को गाना बहुत सेक्सी लगता है, बहुत सेक्सी। यही विजन ही नाम है ना उसका, या रेवल, ये यार म्यूजिक है बे। अबे गाना कहाँ है, सिर्फ ट्रैक कहाँ है ब्रो? बहुत क्रेजी ट्रैक है, सुनो एक बार। मतलब ऐसा एपिक म्यूजिक है ये, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल, समझो ऐसे एपिक म्यूजिक लगता है मेरे को। रुको, तुमको इसका नाम मस्त लगता है भाई मेरे को तो, मस्त। Riot does everything, bro. Riot does everything well. Community management, listening to the pro scene, also catering to the amateur scene. मतलब जो लोग टाइम पास के लिए खेलते हैं उनके लिए भी कुछ है, गाने भी है, एनिमे भी है, स्टोरीज भी है, लोर भी है, सब है बे। मतलब मैं ऐसे ही राइट का हमेशा मैं तारीफ नहीं करता बे, राइट इज जस्ट बिल्ट डिफरेंट ब्रो, मतलब अलग ही है बे, कुछ पता नहीं यार, मस्त है जो भी है यार, सच्ची में बहुत क्रेजी है। मैं इसके लिए बहुत होप कर रहा हूँ ना, इंडिया में वैलो मोबाइल बस आए और मोबाइल गेमिंग में एक और कंपैरेटर गेम खड़ा हो, बस ये चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। They've been holding on very strongly to this Kalista Renata combo. I think well, we finally have new champions. So. Yes, sir. But वो 50k के है ना यार? Oh, champion is champion, bro. 50k, 100k doesn't matter. It does matter when 100k के champions can't participate. एक सेकंड, क्या 100 के क्या 100k के champs participate नहीं कर सकते ना 50k tourneys में अभी? Not just the champions, the top 4. Top 4, yeah. ओ अच्छा 100 के, ओ अच्छा The community clash. Tournaments. समझा अच्छा। ये एसके वाला अभी ये लोग ही जीते क्या? अक्षज नहीं, अक्षज की टीम खेल नहीं सकती ना, 50 का था वो। नहीं तो अब भी वो कौन सा इवेंट खेल रहे थे जिसका मैंने एक कोई तो मैच वॉच पार्टी किया था? तेरा ही तो था वो। That was your community clash, my man.
वो आपका था सिड भैया। बराबर बराबर, राइट राइट। इसलिए बोला था मैंने आपको, सिड भाई आपके मैच में आप शास खेले आज, आप देखोगे क्या? Sid's reaction on that match was something godlike, man. कौन क्या कर रहे हैं हम? स्कैनर बैन कर रहे हैं, स्कैनर बैन प्लीज। यस, फ्रेम ड्रॉप आपका टूर्नामेंट टीओके जीता था सिर्फ भाई। वही ना, अक्षर वाली टीम ही जीती थी ना। बैन कर दो ना उसको कम्युनिटी से, मतलब इतना सब जीतने के बाद भी वो वॉच पार्टी वगैरह में अगर नहीं आ रहा है तो क्यों अलाउ क्यों करते हो उसको? मतलब इतना भाग क्यों देते हो उसको? करण को बोलना पड़ेगा, करण स्टेटमेंट डालेगा अभी टीसी के बीच टेम्परेरी में। दे दो ना, बैन दे दो टेम्परेरी। The best part was Sid getting tilted for every time Akshar dies in mid. ओ हाँ भाई, वो 6 बार तो सोलो हुआ था ना वो। भाई मैंने उसका कोई तो रैंडम मैच में देख रहा था जब वॉच पार्टी ने, मैं एक्चुअली बैठ के देख रहा था वो, तभी वो वेक्स खेल रहा था। 12 या 14 बार मरा था वो। अनइंस्टॉल मैसेज भेजना था ना, अनइंस्टॉल। के योने आप, कम ऑन लेट्स सी क्या करते हैं। वापस जैक्स कार्नर जाएगा यार, लाइक डोंट लाइक दैट। Same shit every game. Let's just try and go back to bodying bot lane, because that was the thing that was successful for them in LPL. But as you say, they're Okay, now what are we locking here? Ash गई है। Are we locking Ezreal guys? Fuck you, it wasn't 9 deaths. मैं मेरे वाले नहीं, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। 12 बार ब्लैंक वाला गेम था, वेक्सी था। भाई नार इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टॉप लेनर्स, मतलब मेरे एरा का मेरे को बहुत पसंद है नार। मस्त लगता है मेरे को नार। स्मॉल्डर बोलोगे टॉप के लिए भी। तू खेलता भी था ना भाई? मैं नार हाँ खेलता भी था वो टाइम पे बहुत। Yeah, Ezreal Maokai, okay, we like that. Smolder जाएगा। Again, 3 games in a row. Kaisa, okay, Smolder ban करो। Leonarel ban हो गया, I think। मार गया। You're going to be able to unlock this Ezreal for a lot of those fights, but I think that's honestly where Kai's is going to struggle. I look at not a huge Renekton भी बहुत strong है, फिलहाल खेल नहीं रहे लोग। Renekton is pretty good. I think Tenacity is going to relax, no? क्या? Tenacity is going to relax, Renekton development. But it's fine. There has not been a lot of support bans. It is just the Ari, Smolder, come on. Nautilus is up, Leona's up, right? Everything's up. So you can just grab some sort of hard engaged champion. I think that plus some sort of high consistent DPS champion for Knight would round out the composition that BLG have quite well. And I do think Jax is a great answer for side lane Yone later on. Coffee bhi bhai. Obviously such a strong answer to all of the auto attack damage that Yone does really rely on. And we'll see if it is going to be, you know, a little bit of a cook in the draft, and if they are going to be sending Maokai to top again. BLG certainly thinks that it is a possibility at least, because they are going to maintain that ban here on the brand. Yeah, they are getting value on क्या क्वीन तो नहीं ले रहा है? ना This would be crazy. सपोर्ट नहीं आएगा यहाँ पे, मिड लेनर ही आएगा वैसे तो। क्या आएगा वही है, सिंड्रा आ सकती है वापस। रेल आ रही है। Sorry, in the semi-final to take down Bin, so I think it's more of a like, hey, we remember what you did, but it's not going to go the same way. Nah, he won't, will he? Wow. All right, Akali versus Yone in the It's getting spicy up in here. मैचअप अच्छा है, बट पॉपी आ गई तो अनप्लेबल गेम है यार उनके लिए। Like the 90% win rate assassin in the mid lane versus the 3-8 Akali, which has not really been looking strong. But he likes those odds. He likes those odds, and it is Poppy jungle, anyone? So has the confidence that he can just make this happen. This is going to be interesting. They are committing pretty Rumble. heavy dive. I think Nah. we are getting a hard engaged support on 5, I would think, from BLG to really kind of round things out and try to get into that back line. But with the buy coming through, it's going to be a nightmare game. You have to feel like for both Akali and for Kaisa potentially. I mean, if you Akali के लिए तो unplayable है। so much follow-up AOE that can hit Akali in the shroud and also potentially Oh, actually lock them down pretty hard. Also, who's यार actually why better है? It's so difficult to lock down an Ezreal. I said it with the Yeah, what does Akali even do here in this situation? relatively beefy in himself, and माओकाई W, बट पॉपी आनी थी, पॉपी से बहुत सही हो जाता।
for this Akali, but this could be an interesting one. Now. I mean, Sejuani Rumble is one of those pairings that we've seen be really popular with the LPL and LCK teams. We were talking about this morning when we were talking about Light बहुत अच्छा है Ezreal खेलता है. Triple melee top side here, plus a melee support, so it is going to be the Maokai getting moved around. It is going to be getting this time. It is going to be Crisp that is piloting it though. So you know there are a lot of pairings here for Tarzan to look to try to attack really any lane where he sees an opportunity. On the other side, I do think it could be a tough game for Knight. I mean, I really agree with you, Rob. अच्छा चैट में एक्चुअली किसी को सीखना है अगर लीग तो इंटरनेशनली कौन से स्ट्रीमर्स को फॉलो करना चाहिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काका. वो टाइम पे नाइट ब्लू होता था, अभी कौन है मेरे को पता है. अभी नेमेसिस है, ब्रॉक्सा है, जंगल मिड दोनों करते हैं स्ट्रीम. Broxa is really good. Yankos भी है. Yankos के रील्स भी मैंने देखे एक्चुअली. हाँ रील्स आते हैं उसके काफी. उनके एजुकेशनल स्ट्रीम ही है. नहीं टाइलर वन मत देखो. They should definitely follow Asset you said. मैं सीखा था नहीं. हर जगह प्लगइन डालने. टॉप पे अलॉय एनएल करके भी है, वो भी बहुत अच्छा है एक्चुअली. उसकी भी एजुकेशनल स्ट्रीम्स है. He's very good. Well, they're going to need everything they can get. Down 0-2. Weibo either goes on a 3-game winning streak to break their 10-loss streak against BLG now, or their season is over, just shy of being able to go to London and fight again in the finals. And we were talking about this backstage, Flowers. Like, it's so tough. You've already lost twice on red side, so now you have to get a win on blue and then swap over to the red side and try and figure out how the hell to deal with this, like Yone, how to deal with so many. अब वेबो के लिए 1 game at a time होने लग गया. This is also pretty interesting. So Light has elected to go teleport. All of the BLG players were like pinging that. It felt like when it's coming in, people were kind of pinging over on that. So I think वो 1 game at a time वो शाहू का टीपी के बाद ही हो गया था. Which is really strong for that yeah, maybe. as long as it's not an all-in play, because it can really allow you to dominate tempo, get a quick early base, and be able to kind of take over in that position from there. And we're talking a lot about this Akali, whether or not it's going to be able to succeed. Reminder, this is our featured matchup presented by Mercedes-Benz. Xiaohu versus Knight. Game record 30-32, ever so slightly favoring Knight. Series record tied dead even 11-11 between these two. It is very even here, but the thing is, when you're a little kid and your dad beats you in the 1v1, you know, and then you grow up and you start dunking on them, that's kind of what Knight's been doing to Xiaohu lately. A 10-game winning streak, I feel like really tells the tale of how things have gone this year. I mean, these are the two premier mid laners in the LPL. In the last 18 finals of the LPL, 16 of them have had either Xiaohu or Knight in them. They go toe-to-toe on LPL titles with 5 apiece, toe-to-toe on the record for most consecutive finals at 6 apiece. And it really feels like a world championship is what. तो Maokai support अभी देखा मैंने. Apart from obviously the 2 extra MSI titles that Xiaohu has, but it really has been so favored at this world level for the LPLs. Who takes that title of best mid lane? Maokai 3-way flex हो गया अभी deep run में tournament के. Was matched. You know, traditionally people with the Alistar are trying to avoid that lane. We do have Tarzan up on the top jungle side, support. On an Elk, still level 1. We'll see if they want to look for any sort of really aggressive play. But they are very. Are we looking at a dive, guys? ये wave के बाद में OL chunk हो रहा है अच्छा खासा. No, Tarzan नहीं जा रहा. Tarzan's like, I'm happy with the opponent red buff. I will go away. We've already talked about it a little bit, but just again, going to be keeping our eyes this entire game on Knight's Akali, on whether or not he can actually navigate these fights, because AoE is the thing that nullifies the normally very powerful shroud that the Akali has. Look at Shun though, he's setting up for a dive on towards Breathe immediately on the bottom lane. Alright, Breathe gonna get stunned up here for the counter strike. Pin wants to get no, that's really good. That's really good actually. That works. Wave भी वो catch कर लेगा TP करके. Yeah, that's good for Breathe. I think you're pretty happy because the घुस के मारेंगे. The kill went to Breathe and on towards Shun, so actually in the grand scheme of things, it works out pretty even Stevens. Yeah, it's not too bad. I mean, I do think it's still a well set up play here. Bin holds the counter-strike for so long, so when there's the flash coming through, it's still level 2 Breathe. They do kill him off. As far as total gold, though, you did get the first blood over on BLG, and you denied
about 4 or 5 minions there, so he's going to be down a little bit of XP once Bin actually does collect the wave as it pushes back towards him. But for the isolated 1v1 for now, things pretty darn even. Plus the extra assist money for making sure that you have a second guy involved in it does end up being 600 total gold versus 300 traded back the other way. Feels good for BLG, but still nice, close game early on with just that trade in the bottom side. It's not going to be another 17-minute first blood in this one, but we're also not getting that chicken fight. Look at Shun again, though. He resets, giant spell, bot lane again. They really want to punish this. I mean, I think it's really smart. The wave is horrible right now for Breathe. Breathe has no flash, no TP, and the wave is heavily stacking and pushing away from him, so they know he's going to be vulnerable. Oh, but now problems up in the top side as On and Elk got to be Oh, careful bhai. here. Light and Chris doing a great Light? job in this 2v2. Enemy support nearly भाई अच्छा है इजराइल कितना मजा आता है देखने Still trying to see if they can put the pressure down. This wave is going to crash as well, so they might be sitting ducks underneath here, especially if Light can get a couple of those mystic shots to land. But both junglers now just fighting on this bottom side. Luckily, Tarzan was there, so you do get the crash for Breathe on that bottom side, and it won't get zoned off. Yeah, that was interesting. It looked like Shun was trying to delay time, see if he could actually secure it without having to use Smite, because Knight could move over. But at the end of the day, Tarzan does at least force that Smite to be used. And it is going to be Breathe having to back off here. And it will be a bit of an advantage down on that bot side, as far as the experience goes, but not much of one. So it has been total grub control so far in this series for Weibo. The first set of grubs going to spawn here in about 45 seconds. Remember that game number 1, Weibo got 5 of the 6. Game number 2, they ended up getting 6 of the 6. I'm curious if BLG will be able to do a better job fighting for those. अगर इनके लेवल का खेलना हो तो मुझे लगता है 6-7 साल तो और जाएंगे ना. I mean, it's just felt like... No, it doesn't have to be that long. It just depends how much consistently you play the game. Like, हर दिन कितना खेलते हो? कितना ही ग्राइंड करना पड़ेगा. 12 घंटे तो कोई ग्राइंड नहीं कर पाएगा. ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कोई भी. ये लोग करते हैं 12-16 घंटे ग्राइंड. बीजेएमआई तो एक बार में समझ में आता है ग्राइंड करना. ये तो बहुत क्रेजी है भाई. इसका मैंने मोबाइल वर्जन खेला है. वेरी इजी. इसके मतलब क्या बोलते हैं. हाँ. वाइल्ड ड्रिफ्ट नहीं, बट इसका मोबाइल वाला अभी तुमने प्रो प्लेयर्स के सामने नहीं खेला है. नहीं, ऑब्वियसली नहीं. हाँ, तो वहाँ पे तुमको डिफरेंस दिखेगा. देखो लोग के मैचेस देखो, ऐसा लगेगा वो लोग मतलब मूवमेंट वगैरह पीसी वाला ही लगेगा तुमको वो लोग का. Stepping up with Xiaohu, trying to contest here for the grub. Second grub goes over to Shun. Knight's got to be a little bit careful. Goes into the smoke, slam into the wall with the Eastall impact. Shun looking to lock up Xiaohu. नाइट लो है. योने पे अल्ट है. फर्स्ट ब्लड होएगा. फर्स्ट ब्लड हो चुका है एक्चुअली. But Ben has made his way to the fight first. All 3 grubs going to be secured now by BLG. Nice. Fate sealed for Flash is Crisp now in the middle of everybody.Got to be careful trying to get back over the wall. But Ben's on him. Knight behind him, trying to keep मेरे लिए हो रहा है. सबके लिए हो रहा है. right back over the wall. Breathe finally makes his ना way in. BLG भाई. Still available. Clean. But BLG are all on the exit route. It's 3 grubs and 1 kill for BLG. I cannot believe BLG managed to get out of that. And the fact Damn. that Bin got that kill, नाच के गई उन पे मुंह evens पे. up the massive wave he just lost on bot lane as well. So XP definitely in favor of Breathe, but I'm baffled that no one died on BLG side. I mean, they played it out really well. Knight was dancing around in that shroud, waiting until the said 20 stacks from the passive would actually fall off before getting back into combat, so he couldn't actually get focused down and burst down. I mean, this is the fallout of that wave. It was a massive stack wave. He lost, I would say, a good 2 to 3 waves down on that bot side, and then now it's stacking towards his opponent. So Breathe is going to go plus 20 CS or so, maybe even more than that, off the exchange from where he would have been. Okay, Chris trying to close the distance here on Elk, but the Kai'Sa is fast enough to get out. On now, showing up to cover his AD carry, while Knight pops the smoke back in the mid lane again, trying to get away. ओ इस पे फ्लैश अल्ट नहीं है. To lock him up, but there is no Nothing. Sejuani ult. He's still only level 5 Still gets out. Means they don't have the CC. Nice buffer. The kill on the flash of Sakali. Yeah, both ultimates not being available meant that they just didn't really have the follow-up damage, so Knight able to step away. Bin now actually being the one to cover, and Bin has been doing a good job of kind of sacrificing himself, but he wants a bit more here. Trying to go for Zhao. Zhao has flash. It's Bin and Shun working together to punish अरे. And Zhao just... ओए भाई crazy. Beautifully done, just like the last time. Xiaohu drops, and another kill over to BLG. And he flashes at the back of it as well, which means that he ends up losing that on top of everything as well. Nice play from Bin with the roam up, and Shun has been doing a great job of playing with this Garner for these ganks through the lane, and now it's going to try and catch Crisp.
All right, let's see if Shun can get this done. Ben coming around with the counter strike from the side. Crisp, only level 5, still pretty squishy here from the Maokai. Wait, Bye-bye. bye, crazy. With lamp posts. Ben picking up another one as Shun escorts his top laner out. They'll rejoin with Elkin on, but Xiaohu locks up the starter and guarantees that Weibo can grab themselves their second kill of the game. They do get that one kill back, but still great things happening on the map here for BLG. Knights pushing in mid lane as well. And with those kills, Ben is now top 10 in MSI plus Worlds kills. He passes Ruler, one of those most historic players here. Ben, it's kind of like sneaky how long he's been playing. I tend to forget and think of him as one of those newer players, but he's been around for a while now, back to the Suning days. Yeah, I mean, where he got the first ever pentakill in the World Finals, the man has been setting records for a long old time, and I think he wants to stick around and keep setting them up, especially if Shun is going to keep setting him up like this, as they look for this engage on towards Crisp. Yes, he gets the knockback, but the answer is there. Counter-strike, the whack down. And then it is a nice job from Light to land so many of these Mystic shots as they start to move back out. Having Xiaohu in the back pocket as well, having a little bit of extra move speed thanks to boots, means he's able to take on the Scorpion. Yeah, the Fated Shield is nice. He can't flash out. He didn't have his E up yet, and if you use the W, Fights थोड़ा होते रहते हैं so even though you have the shield, so there's nothing he can do there. So he just turns around, accepts the death, makes sure that there can't be any sort of chase down after that to put pressure on the rest of his team. But things pretty even overall. It's just that top. Grubs are spawning soon. BLG will probably try to look for it. They're going Dragon first though. On the desk, and again, he's turning in another strong performance, setting his team up for success. It's been 10 minutes, not a single Drake's been taken. The second set of grub spawns. This is the first time in the series that BLG has acquired more than one, and they got that entire first set. Just getting a single grub from this second group is going to enable him to have those Void Mites spawning, going to enable him to have that extra split pushing power with this Jax for Ben. But I don't think they will. I think they're just going to look for gold on Knight. Then we talked about this Akali really needs to get snowballing. She's already behind thanks to that kill that Xiaohu's able to pick up. So, hey, instead, we're just going to play on towards bot side, get the Dragon stacking starting, and also look then for that extra gold on towards the Akali. We'll see how much he's going to be able to 3 get. grubs. Actually, Dragon Shun could even move down towards bot side if they do think that there is some sort of an angle, but looks Grubs more important or Dragon more important? And Breathe had it warded out either way. It's a very good point. If you start taking dragons very early on and you can get your soul drake early on, your 4th drake, then you can prioritize your drakes, and it depends what that drake soul will be as well. But otherwise, for the first drake itself, I'd rather take the 3 grubs over the drake. But coming into the Worlds, they were like, no, we want the guy who's able to come up with the creative plays, the guy who can play the Kindred, the guy who is piloting this Skarner so incredibly well here. And it's really made you forget about a bit of the rough start that BLG had, because they swapped in Shun, after a couple of those losses, and he has been a guy that's bringing stability now, which is not really what you kind of associate with him. He was more that explosive player, go dive bot, go create these spicy plays, but he has been great for them on the Skarner. 2v2 could break out in full swing here on the top side. Xiaohu, though, snaps right on back with a soul unbound. So the scrap ends before it really begins. And Ben's happy enough with that, considering he's already down to about 1/3 HP. Tarzan will walk up, face check into that brush. Not too afraid here on the Sejuani with the Arctic armor ready. Looking for a dive. Also hanging around nearby. There's a lot of Weibo presence up here. As there's an Alistar this game? And Shun is making sure Yeah. Ben is not Welcome back, Ravina. meaningful threat as he pulls it all up. Yeah, sorry, I was working. Really? For the dive, but I thought office is closed today though. this Yone is actually starting to get into a freeze. So it's a rest and recover, but there's no off for me. Xiaohu was very good in game number 1 on this pick, and he may have an opportunity to do it again as Knight wants to fish for Breathe. See if he can find him here. The Akali, a level down though. Not quite at the point where Breathe is. Has not been able to have as much time here in the side lane. So Knight just thinks better of it, backs away. Yeah, I've always been amazed with the depth of the fog of war in Worlds. Maybe we can look for the Akali up against Breathe, but like the fog of war is हमारे scene पे भी कर ले. No, but then the fog of war is so thick in Worlds. Of course, maybe because of the torment realm. No, you play without fog of war, as far as I've noticed. Yeah, you don't put on fog of war. Yeah. Yeah, no, there is fog of war. What are you guys saying? Nah. There is no fog of war. Guys, there is fog of war. नहीं बाबा. Been to group so much that he's being put behind constantly as far as farm. You look at this top lane matchup. Assassin, go clip it. Yes, I'm gonna check and I'm gonna tell you. Wow. I am confident there is fog. Don't be that guy, Assassin. Why?
these are kind of the things you'd see in the game ones. सिड भाई पिज्जा कैसे जला था? अरे पिज्जा शेफ नहीं जलाया था। आ गई क्या वीडियो? रिलीज हो गई क्या? Oh, the flashy don't hit. Both flashes burn. Look at the level that Bin is at. He's only at level 9. Yahoo 10 है भाई. Breathe 11 है. Trying to find that big play. Can't quite make it happen, but at least it is the trade of flashes, and Knights gets grasp on bot side. Worth pointing out here, very big difference compared to games 1 and 2 with those turret plate Hey, hey. were after 14 minutes of the game. 23 plates in game number 1, 22 plates in game number 2. Far, far less, not even 10 this time around in the third game. Mastercard. Card lane economy snapshot, the whole Talking about goal Rift for Herald. BLG is on a star. Is 4 burger good for dinner? He's a big old meatball. 4 burgers? Is it enough for dinner? I want to know where these burgers are coming from. Pushed up a little bit further. Bin is already in position, but the equalizer summoned up by Breathe to try to get rid of this wave. That last cannon Oh no, Breathe is going to get overheated. Oh god. Engage the Alistar ultimate, and BLG just brought it Could you get his ult? Top lane experience. They just You want to stay on an island? We let you be isolated. like they just swallowed him, bro. Like what? Big wave was crashed by Weibo, so yes, you're getting a kill, but you're still losing on Oi. the BLG. And at the very least, he actually did kill off the wave with the equalizer before it did crash. So the tower damage is now coming in, but they can't kill off that tower. Had he not been able to actually Doesn't get the tower maybe though, the yeah. tower goes down as well. Yeah, it is definitely a close thing. Maybe he's saving it for the ADC to get gold. Down just yet. No, he couldn't do it then. 30 seconds on our next Drake gets off. picked up by BLG. It's going to be 16 minutes in, and second Drake of the game will only just now be spawning, so it's not like it'll be a big soul rush type of game. BLG Yeah, it's definitely not a soul I rush. feel like there's a ton of pressure on either side to make a play for it, and BLG Why is Alistar over the glowing? top side instead. And we'll just see what that soul spawn is going to be, because if Why is that's Alistar deck, glowing? you know it's not going to be that soul, which kind of takes. Is it a support item? Yeah, it's a support item. Shield मिलती है उससे. Oh, you're talking about the shield, the yellow shield around him. Okay. Soul that I think could be incredible. Yellow, yes. Herald summoned up mid lane by Weibo as they'll try to force down this tier 1 turret. Okay. Breeze went to protect the turret, couldn't do it, and Has gave his ult life up. actually नहीं use कर Bro, the man cannot breathe. You're stealing my jokes, okay? मरता नहीं ना लेकिन वो वैसे. No, he doesn't die, he doesn't die. Kill gifted across the night. You can see BLG is giving That so hits also, much you don't die. to try and get this Akali ahead, but the teleport needs to be burnt. Means that Weibo know that I can't get involved. So it's a terror trade for the dragon plus a kill for BLG. I'll see what the soul He is. has that first item completed, has that storm surge, working towards potentially a proto belt or whatever next. And Bin Hex Tech Soul. The Hex Tech gates are here, try boys. to use the Kai'Sa to collapse on those side lanes and look to try to potentially avoid Oh, this is gonna be some showdown? Maybe? No? Okay. WBC like dragon लेते चले गए. Oh? What the hell? But he's an Alistar, he can't die that fast. I don't know. उसने उसको उधर फेंक दिया. और ले बेटे खत्म. अरे भाई. What? योने बच गया. अरे नाइट भी बच गया. मर गया योने मर गया. Oh, the Rumble ult, the Rumble ult, he can't leave. Oh my god. Light. सुन भी जाएगा. Come on, get that triple light. I don't think he Oh my god. भाई वो नाइट सबसे पहले लो हुआ था. भाई टार्जन की 1 HP थी. हाँ वो अकाली श्राउड करके निकल गई उधर से साइड से. भाई साहब. Crazy stuff. नहीं, but that's great. 2 टरेट मिलेंगे. What a fight. कार्नर अल्ट क्या कॉल चीजें उठा के इधर ले आया भाई फिर से. वॉल क्या होता है उसने बोला. 2 turrets I think completed Muramana. Replay time. On just knocks him over there. जैसे आते ही भाई वो उठा के एक को फेंका और दूसरे को लेके आया. What do you try and achieve here? Because you've got Oh everyone भाई. stuck in the pitch. अरे बड़ा नहीं None of them get योने अल्ट बहुत अच्छी थी इधर. Champions try and go in. Ah. Doesn't really have that And execution. then the Rumble ult. Fuck, cut last him. shot से भागा है भाई. ने तो पिघला दिया सब लोग को. No, he पूरा cut off कर दिया उधर ही अंदर पिट के अंदर घुसा दिया रंबल अल्ट में. हाँ. वो बाउंड्री बना दी, इधर से नहीं जाने का.
hits an ulti on It's the 3 Mundo to 4 challenge. members as well. His damage had to be out of this world. He's the one who softened up 4000 damage भाई. Did she say Mundo challenge? I knew this Yeah, guy because that's what was you going do. to be You put a border dominating out. the damage charts. Him and Xiao, who really tag teaming to get so much done, and even Tarzan, 2K on the Sejuani. And Tarzan barely surviving with about 50 health there as well. Nice, Shahu well trying to played. get away. Knight puts his body in front of him to lessen the distance, but it still My doesn't God, matter. BM right after it. Weibo mid Thumbs up. laner survives as the What's he got to lose now? 2-0 down hai. So close. But you can see in these team fights that it's the AD carries that are already getting to step up, and Light has a massive lead now. And with Weibo just being able to play this dive, push forward, I think it's just opening up for Weibo to really start to take this game. BLG Ezreal need to get बहुत creative. strong They है need भाई. to start setting up for these overloading side lane plays so the Akali can get value, but in a team fight, I think I just give it to Weibo. I agree, and I mean, when you look at how these two AD carries are having to play all the fights, it's just wildly different. Light is shifting forward. Light is having so much space created for him, while Elk is running for his life from all of these divers on the Weibo side that are piling in, these 4 melee champions that just have a bullseye on the Kai'Sa. It's going to make it really difficult. So, BLG are going to have to be perfect when they choose those engages. Try to get the plasma in onto Light. Try to get Elk involved in that way so they can get into the backline, burst them down, and find a winning fight through that. But one thing I will say is Kai'Sa really can transform as a champion as you get later into the game, because in the early game, you really are that dive champ. Once you start getting more and more AP items, you can kind of just become a full-on poke champ and say, you know what, I'm not going to interact. Very, very scary stuff if he can get to that point, but it's a big if, considering Weibo are the ones who seem to have the magic team fight recipe in this one. We already talked about the AoE earlier, and that dragon fight was a beautiful showcasing of it. The multi-hit on the Fate Seal, the Glacial Prison on top of everybody, the fact that the Rumble Equalizer then just completely destroyed the whole thing. BLG are going to have to pilot this smart, and that's the thing that they have done so far in the series, though. We've seen 2 very close games thus far, but when it really mattered, when all the chips were down, BLG came out on top twice. I think it's more difficult this time around. Hello, Speed. I'm a silent viewer, and to my comments often got notification post stream. I want to thank you for bringing joy to my tough times. Appreciate it, man. Difficult for Knight and Bin to actually play even post streams. Why do your comments go unnoticed post streams? Post stream मतलब कहाँ पे comment करते हो आप? यार ये सब लीग वीक वाले स्ट्रीम पे अगर बातचीत करने तो आ सकते हो. चैट भागता नहीं है तो मैं अच्छे से आपसे देख के बात कर सकता हूँ. नहीं तो ध्यान नहीं रहता चैट पे. Do you think we get to soul in this game, Kaka, or no? There you go. They got that mojo. I don't think we get to soul. After stream gets over, stream के बाद. And that's one of the things I think that just made them so hard to bet against in the LPL. Even when someone have a bad game, you look towards. Sorry, mic बंद हो गया. जाएगा, soul जाएगा ये. Where he was dying time and time again. The contest third drag, I think वो team fight हारेंगे. Be a difference maker. There's so Ezreal is just too strong. as far as individual skill that you can never count them out of a game. All right, we do have पटाखे चल रहे हैं यार, इसकी फट रही है. अच्छा. Dragons alive now as Weibo has control over the bottom side river. Knight Hop कर रही है पूरे रूम में इधर उधर. Bin just pushing out a wave here in bottom. उसके लिए वो soundproof earphone लगा दो कान पे. तीर नहीं. Thank God. Fight कर रहे हैं? Seriously, are we fighting this? After the drink. Oh, that's a massive rumble ult, भाई. Tarzan. Everybody burn. Everybody burn. दूसरी साइड अकाली ले गई भाई. No, that's bad. Nice flash. It's 3 dead on Weibo. It's about to be 4. The dragon fight favored them last time, but this time around it is their death sentence. It was a disaster for Crisp. Yeah. You'll catch it in the replay. He goes to twisted advantage. Oh my! क्या हाथ दिए? Crazy. Which then completely leaves Light alone Direct. on the back line. And that is the exact kind of fight what I'm talking about with BLG. You can just never count them out. Knight finds Light, and even with the fight starting so well for Light and getting so much chip damage down, it just didn't matter. He knows the damage thresholds perfectly on the Akali. He flashes forward, finishes off the Ezreal, creates space for the rest of the fight to really get ran over. But keep their eyes on Crisp here. So essentially they think that they've got the help that they need, but Elk shoots himself immediately down into this fight, brings Crisp with them, which means that then Light is completely Knight के TP ने बहुत खत्म ही कर दिया. All
Need one side multiple tubes are expensive बस हाँ तो watch buy बोलते थे चार minimum no एक second I'll tell you why one sec कुछ एकदम important message है 1 second I'll tell you why health when Knight was maybe 20 to 30 but he knows flash forward Q auto R2 ulti plus the storm surge proc it was precise damage he needed this proc damage from the storm surge to kill him he calculates it perfectly that is the difference between the world's best and everyone else. And we were talking at the beginning of the game. Hey, if Akali gets a couple of kills, if Akali gets ahead of the pace of everybody on Weibo, starts becoming this single issue threat on tonight, then that's तो वो नहीं लेना चाहिए आपने बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा लास्ट नहीं करते और आपके स्वेट वेट के मिक्स करके ना उसको बहुत गंदा स्मेल आता है यार जो भी चीजें आप अपने बॉडी पे स्किन पे लगाते हो ना मैं इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ एक्सपेंसिव वाला नहीं लेना है तो मत लो सस्ता वाला ओरिजिनल ले लो एक्सपेंसिव वाला सस्ते में फेक मिल रहा है तो वो चीज मत लिया करो कोई भी चीज जो बॉडी वॉडी पे लगाते हो बस इतना मैं मतलब ये जेन्युइन एज अ ब्रदर एडवाइस दे रहा हूँ अरे भाई समझ रहे हो जूते ले रहे हो डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी ले लो कोई टेंशन नहीं है बट एनीथिंग दैट कैन मे बी अफेक्ट योर हेल्थ योर स्किन Either go for the original cheaper ones if you can afford it go for the expensive one but expensive का नाम के लिए सस्ता वाला फेक मत लेना खत्म मतलब परफ्यूम में बचपन में मैंने भी लिए देखो मैं जब फर्स्ट टाइम चाइना गया था ई स्पोर्ट्स इवेंट के लिए तो वहां से मैंने ना वो 500-600 रुपए के और भाई साहब भाई क्रेजी क्रेजी तब मैंने वो लिया था स्वेट के साथ जब वो होता है ना बहुत वियर्ड गंदा स्मेल करता है सोल के बारे में पूछ रहे थे ना अभी There's your soul गेम खत्म तो नहीं होगा ना खत्म नहीं होगा खत्म हो जाएगा नहीं अभी नहीं खत्म तो नहीं होगा I mean they could have just pushed Baron buff but I guess not building up from this Baron power play they're about to take the tier 2 bot as well this is going to be a 5,000 gold swing here with the Red Bull Baron power play that is massive 50 crazy stuff into their pockets You needed to execute perfectly to be able to make some of those plays happen earlier. Akali death cap लेके आएगी भाई Zonia में जाए आ गया भाई का 1,000 gold lead for Knight when he started off this game behind. He has played this 3,000 gold exceptionally. And we'll get to see it again. It's the whole top side of the map, right? And this is Xiaohu again. They have taxed his resources. No ult, no flash. Bin pushes in, knowing Knight is going to be able to come in and support. Yeah, and just able to get the immediate perfect execution through him, which means he's got the R2 to follow up. But Weibo are trying to aggress onto BLG as they move into this choke point, and Elk is just free firing the whole time. बहुत crazy लिया रहे इन लोग ने बहुत crazy. Knows he's eventually gonna go down. You're playing with your food का meaning हो गया. Everything, including that W to proc the plasma onto the rumble, kills him off. They win the fight, and the solo lane lead now is enormous. They know it. They are. भाई उसका हाथ काँप रहा था. Finals is one fight away. लेफ्ट हैंड ये वो लेफ्ट से माउस चलाता है प्रेशर होगा ना बहुत भयंकर प्रेशर It is a man who loves this game, who brings it to the main stage and is happy to show his stuff. What? The sun! अरे but follow up नहीं है भाई आस लग गई इनकी तो दबा के भाई साहब ओ भाई ब्रो जी घुस के फोड़ा भाई अरे damn bro crazy My God. I'm working out on having a budget expensive thing, not buying such cheap things. Work hard, buy original expensive things, especially that goes on your skin, goes on your body. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे मैं तो सुशी जाके कोई सस्ते जगह से मत खाओ सुशी इज एन एक्सपेंसिव थिंग पेट खराब होगा गांड लग जाएगी समझ रहे हो ये क्लास आज सस्ते जगह से मत मतलब वैसा बोल भाई बहुत क्रेजी नहीं मैं एंजॉय कर रहा था क्लास वास नहीं ले रहा था वेयरिंग अ ज़ारा परफ्यूम ब्रो मैंने भी पहना है कोई शेम नहीं है सस्ता चीज लेने में सिर्फ दुनिया सिर्फ गुची एलवी इसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती कोई शेम नहीं है ठीक है वो बोल रहा हूँ मैं बस 1000 रुपए का गुची मत लगाओ ये बोल रहा हूँ मैं तो भाई आर्किटेक्चर इजी डूइंग ऑनलाइन वर्क्स
Like he's doing online also. You can get in touch with him. उसका page है, you can get in touch with him. लगाती हूँ अभी, एक सेकंड रुक जा. You can get in touch with him. Yes. Replay कर. Done, bro. Wait. The World Championship back for the LPL. Here are also, of course, in Paris. FPX grabbed it in 2019. They get this Replay coming in 30 seconds. into that final, as it is Okay, Weibo got it. Thank that you. have to go home after a valiant effort, but maybe just not the stronger team today. Yeah, and I think this went according to what we saw from these teams in the LPL. I think more people should be looking It is at Saudi Arabia begins considering the world largest building. Yeah, I know. tournament, and again, Heard he's that. come so far from the time when he was OMG Curse. But BLG, how cathartic for them, right? Because I was thinking, I was hearing some scrim rumors. I was like, oh no, it might happen again. But they come out, they 3-0, pretty convincing fashion. And now they are finally, this is a team who said that the World Championship is their ultimate goal. If they do not get that, they fail. They are still well on their way, trying to fight for that now in finals. And we've talked a lot about how much it means for Knight, but Bin also getting back to World Finals. And I think the majority of people 3-0 is the 3-0. Jack's skin. That is also a possibility. That dream is also alive. Honestly, I'd buy it. I don't even play Jax. It's also a reminder. Cool. I have to run. बहुत ज़्यादा काम है मेरे को अभी. बार-बार messages आ रही हैं. So I will run. Thank you so much, guys. I will see you maybe tonight. I'm not sure. या tomorrow मैं वापस आऊँगा Genji SKT करने को. SKT Genji वापस फिर से करूँगा कल. तो कल फिर से मिलेंगे. Good night.